and since then I was wanting to put up a room or hold up a room. Okay, मैं मीनाक्षी जी को अथर्वी जी को मॉड भी बना दूं, जिससे कि जब तक मैं पिंग कर रहा हूँ दे कैन एक्सेप्ट रिक्वेस्ट। थोड़ा सा डिस्कशन चालू कर लीजिए अथर्वी जी, मुकुल जी, मैं तब तक एक बार पिंग कर दूं और ट्वीट कर दूं so that people can join। सर पता है मैं कुछ पाकिस्तानी अकाउंट्स लेकर आ रहा हूँ, आई एम एक्चुअली रीडिंग देम कि 31% जो बच्चे पाकिस्तान में आज की तारीख में पैदा हो रहे हैं वो किस तरह से इस तरह के जेनेटिक इफेक्ट से, ये डिफेक्ट से गुजर रहे हैं, जो नोवल और कार्डियो डिफेक्ट बेसिकली है। और ये स्टडी है वेल्स और इंग्लैंड में रहने वाले पाकिस्तानियों की, जिनके लिए फर्स्ट कजन मैरिज एक्चुअली एक ट्रेडिशन हो चुका है। सो इट्स अ वेरी हार्मफुल थिंग। अभी हाल फिलहाल में यही बोलूंगा, उसके बाद मतलब इसको पूरा करते हैं। एंड आई एम श्योर कि मतलब इसके ऊपर हमें बहुत अच्छे इनपुट्स मिलेंगे एंड वी विल बी एबल टू प्रोपोगेट समथिंग पॉजिटिव आउट ऑफ दिस रूम। किस तरह से ये एक कुरीति है जिसको कुछ कल्चर्स ने, कुछ ट्रेडिशंस ने अपना एक बहुत ही कह सकते हैं ना इंडिस्पेंसिबल पार्ट बना रखा है, और इसको अपोज करना जरूरी है, विदाउट लुकिंग एट रिलीजन। आई बिलीव जी ये इंसानियत के लिए जरूरी है। यस, ट्रू राइट। ओवर टू अच्छा, अदर और इसमें मैंने एक ऊपर अपडेट, अच्छा सॉरी ये गलत मैंने लिंक लगा दिया। मैंने अभी एक आर्टिकल भी निकाला था एक, हाँ पुराना एक लगा दिया। तो हाँ, ये रूम रिकॉर्ड भी हो रहा है, सो वी वांट अ वेरी डिसेंट कन्वर्सेशन एंड इंफॉर्मेटिव वन, दैट शुड बी द फोकस। ऑफ कोर्स सर, आई एम गोइंग टू बी बैक विदिन फ्यू मिनट्स। आप लोग जारी रखिए, मैं वापस आता हूँ, मेरे पास इनपुट्स अच्छे हैं इसके ऊपर। ये अच्छा टॉपिक है एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। आई विल बी बैक। तो ये एक्चुअली हाँ वो भी आर्टिकल अबाउट यूके, राइट। यूके में तो इसके ऊपर अच्छा खासा कमेंटेबल कि ये इस बात को भी इंडिकेट करता है जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी बच्चे हैं वो 13 टाइम मोर प्रोन टू जेनेटिक डिसऑर्डर बिकॉज द ऑफ कोर्स द कंपेयर टू द अदर बेबीज बिकॉज ऑफ द कजिन मैरिज। इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी है, अच्छा खासा रिसर्च है इसके ऊपर, बिकॉज समटाइम्स वीजा के चक्कर में भी लोग अपने कजिन वगैरह से शादी कर लेते हैं, और कई बार तो ब्रिटेन वगैरह में एक कमरे में कई लोग रह रहे होते हैं, मतलब पूरी 3-3 पीढ़ी एक मकान में रह रही होती है उसमें। हाँ। तो उससे अथर्वी जी, उससे लॉजिस्टिकल इश्यूज तो हो सकते हैं, पर ये जो फर्स्ट कजन मैरिज है इससे जेनेटिकल इश्यूज भी हो जाते हैं। तो वी आर मोर कंसर्न्ड विद जेनेटिकल इश्यूज रादर देन लॉजिस्टिकल इश्यूज। फैमिली में ही करते हैं ताकि अपनी फैमिली को यहाँ बुला सके। इनफैक्ट कुछ साल पहले तो ये ब्रिटेन ने एक लॉ भी पास किया था कि जो भी आता है ब्रिटेन में उसको एटलीस्ट बेसिक लेवल की इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। आप स्पाउसल वीजा पे नहीं आएंगे, अगर आए तो आप प्लीज इतना पढ़िए, क्योंकि जैसे कि काउंसिल वगैरह होती है ना, तो उसमें अगर आप देखने जाओ कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, कितने कजिन है, कितने कि आपकी कजिन मैरिजेस है, इस तरह की सर्वे हमेशा जो लोकल काउंसिल्स है ना सिटीज की ब्रिटेन में वो कराती रहती है। बट उसमें भी ये लैंग्वेज इशू आता है, और ये आता है कि औरतें हैं तो बात ही नहीं करेंगी अगर मेल सर्वेयर है तो वहां तब उन्होंने ये रूल निकाल दिया था कि एटलीस्ट यू शुड नो बेसिक इंग्लिश इफ यू आर लिविंग इन इंग्लैंड, विच पीपल वुड फाउंड वेरी फेयर। और जब क्योंकि सर्वे ही नहीं करते वो, तो इसलिए कई बार डेटा भी ठीक से निकल के नहीं आता। जो भी आप डेटा आर्टिकल में देख रहे हैं, दैट डेटा इज कमिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल्स एंड एवरीथिंग। तो सर्वे में पूरा डेटा आपको मिल जाए कि कजिन मैरिजेस कितनी होती हैं। आई एम आल्सो लाइक लिटिल बिट डाउटफुल अबाउट इट, क्योंकि वो हिस्सा ही नहीं लेते थे सर्वे में। अच्छा, ये ऊपर एक मैंने सर्वे का रिजल्ट लगाया, दिस इज एक्चुअली अ रिसर्च स्कॉलरली आर्टिकल जिसमें नॉर्थ इंडिया के बच्चों पे सर्वे हुआ था। और एक जो आप मेरे ख्याल से यूके की स्टडी का रेफरेंस दे रही है, वो ब्रैडफोर्ड स्टडी का मेरे ख्याल से आप रेफरेंस दे रही हैं, वो भी है मेरे पास, मैं उसको भी अभी लगाऊंगा थोड़ी देर में। लेट मी फर्स्ट आई थिंक नाउ इट्स अ डिसेंट पैनल, तो वी कैन टेक सम ओपनिंग रिमार्क्स स्टार्टिंग फ्रॉम अथर्वी जी, मीनाक्षी जी, वी गो राउंड टू मैथ्यू जी, मूर्ति जी, and thereupon.
So, Atharviji, or as an opening remark, would you like to add some more statement, or should I move to या Manakia? सो आई वुड आल्सो ऐड कि जो 13 जो मैंने अभी डेटा दिया था इस पे कि इट्स अवेलेबल डेटा नो, सो अगर आप थोड़ा सा भी नहीं करेंगे तो आफ्टर पीपल हैव रेड दिस अबव लिंक आई विल ऐड वन मोर लिंक, दैट्स ओके। तो 13 टाइम्स मोर जेनेटिकल डिसऑर्डर जो है प्रोन होते हैं बच्चे जो कजिन मैरिजेस में होते हैं। एंड ये अभी भी इसको अब टैबू माना जाता है वेस्टर्न सोसाइटी में, बट जिसमें हर वीक में एटलीस्ट 2 बच्चे होते हैं जो कजिन मैरिजेस की वजह से ही मरते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू कजिन मैरिजेस। बट जो सर्वाइव करते हैं उसमें भी ब्लाइंडनेस, डेफनेस और एक मिनट रुकिए, ब्लड एलिमेंट्स, हार्ट और किडनी फेलियर, लंग और लीवर प्रॉब्लम्स एंड अ मिराड ऑफ ऑफ्टन इनक्योरेबल एंड कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल और ब्रेन डिसऑर्डर। ये सारी जो बच्चे सर्वाइव कर गए हैं उनमें भी ये बहुत ही प्रोन होते हैं कि उसमें भी ये सारे डिजीज हो, और आगे जाके क्योंकि पूरी लाइफ का डेटा नहीं लेते हम लोग, तो हाउ डू दे कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, डू दे गेट अफेक्टेड बाय दिस द social issues, or extremist ideas more prone than compared to anybody else who is not born out of the current cousin marriages। इसके ऊपर कोई डेटा नहीं है, बट आई थिंक देयर शुड बी रिसर्च ऑन दिस टू। तो ये मेरा ओपनिंग रिमार्क होगा दैट दिस शुड बी completely looked down upon to irrespective of whichever religion you belong। जी अथर्व जी, तो वी विल नाउ गो टू मुकुल जी। मुकुल जी, would opening remarks and updated with respect to that, which is marriages is in Saudi, having said so, that biological impact on the next generations. Yes, sir. So Thank you Mukul very ji, much. over to you if you are I'm around. audible, right? ये डेटा इम्पोर्टेंट है, और इस डेटा पे मतलब इसके ऊपर मतलब हमें फोकस करने की जरूरत है। Every year there are about 90 more babies deaths than would be expected in Pakistani community in England and Wales because of birth defects due to genetic reasons. But this issue is highly sensitive because marriages within the families is an established cultural tradition. अब मैं जो डेटा दे रहा हूँ आपको वो 2007 से 2013 का डेटा है, जहां पर हमने देखा कि 13,500 बच्चों की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स, बिकॉज ऑफ फर्स्ट कजन मैरिजेस। 31% जो पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग रहते हैं इंग्लैंड और वेल्स में, उनके अंदर ये फाइंड किया गया है, और इट इज एक्सट्रीमली हार्मफुल। मैं जब भी ये बात बोल रहा हूँ तो आई एम नॉट यहाँ पर मैं किसी कम्युनिटी स्पेसिफिक या उसको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, उसके ऊपर हम बाद में आते हैं कि किन कम्युनिटीज ने इसको ट्रेडिशन बना रखा है, किन कम्युनिटीज ने इसको मतलब एक तरह से एक रिलीजियस प्रैक्टिस या फिर अवेल कर रखी है। But yes, this is extremely harmful, and we are required to look upon it, and we are required to call out the immense odds of society, जो कि हमारी सोसाइटी के लिए harmful है। Over to any speaker if willing to speak something. I'll be mute till then, and और data हम लोग share करेंगे बहुत जल्दी। Thank you very much, sir, for allowing me to speak. Ji. Thanks. So initially we are just taking opening comments and then we will go on to a detailed discussion. Matthew, would you like to take 120 seconds to make your opening remark, or Matthew ji has moved out? Ji Murthy ji, would you like to take 120 seconds to make your opening remark? Yeah, Jai Shri Ram. Ram Ram ji. I'll let you know one thing. You see, जो ये chromosomal abnormality, this is a very well established fact. एक होता है कि जो ग्रेगर मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था बहुत पहले का, इट वाज अ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसमें क्या होता है कि जो XY क्रोमोसोम होता है कि जब ये इंटरचेंज होता है तो इसमें यू कैन ऑलवेज ट्रांसफर डिजीज। सो जो होमोजेनिसिटी होती है, जितनी ज्यादा होमोजेनिसिटी होगी उतना ज्यादा डिजीजेस ट्रांसमिट होंगे हमेशा। ये एक्स रिलेटेड डिजीजेस काफी होते हैं, जैसे हिमोफीलिया हो गया, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा हो गया, काफी सारी डिजीजेस जो हैं ये ट्रांसमिट होती हैं थ्रू एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम, और ये हमेशा
जितनी होमोजेनिसिटी होगी उतना ज्यादा ये डोमिनेंट जीन बनेगा और उतना ज्यादा इसमें डिजीज होते हैं। और ऑब्वियसली इफ यू हैव अ को साइंगुइनस मैरिज तो उसमें काफी ज्यादा हो जाएगा, ये काफी ज्यादा डिजीजेस ट्रांसमिट हो जाती है। इट हैज टू ट्रांसमिट, इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। दैट्स द थिंग, अगर एक जनरेशन में ये स्टॉप भी हो गया तो दूसरे जनरेशन में आ जाएगा। सो इट्स वेरी कॉमन एंड इट इज डेंजरस। Thank you, Gurumurthy ji, for your opening remarks. Mikhail, would you like to make your opening remarks? Mikhail, you're not audible. Maybe there appears to be some issue. You might want to exit and come back. We'll go to Dennis. Dennis, would you like to make your opening remark? अरे मैं जिससे भी रिमार्क करने के लिए कह रहा हूँ वो चला जा रहा है। ओके, राजपूत जी हेलो, या गो अहेड। आई ऑडिबल? या सो आई वाज सेइंग कि जैसे अभी जी मूर्ति जी ने बताया कि यस इंडीड ये जितने भी कोसाइन मैरिजेस होती हैं, कजन मैरिजेस, ये दे स्प्रेड बिकॉज ऑफ मतलब दे आर द मेन रीजन फॉर द स्प्रेड ऑफ एक्स-लिंक्ड क्रोमोसोमल डिजीजेस। सो और इसके साथ साथ भी हमें एक और फैक्टर पे ध्यान देना होगा कि इन एक आता है आपका बायोलॉजी में एक टर्म आता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जिसमें क्या होता है कि ड्यू टू अपनी फैमिली में मैरिज करना और प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन, तो क्या होता है कि जो सातवीं पीढ़ी तक होती है, तो सातवीं पीढ़ी जो क्वालिटीज़ आपकी 7 पीढ़ी पहले पेरेंट्स में होती है, बढ़िया क्वालिटीज़, वो खत्म हो जाती हैं आपकी 7th जनरेशन में। तो इट ऑल्सो लीड्स टू डेथ ऑफ वेरियस चिल्ड्रन इन एंटायर वर्ल्ड। जी, आगे बढ़ते हैं। एजेंट एंड देन मुस्कान एंड देन आई एम दैट एजेंट। ओवर टू यू। Hello, everyone. I'm hoping you guys are having a good day. I would like to ask a few questions and get the answers from esteemed friends, and then we move the discussion. It will be educating for everyone and myself as well. My first question will be to the gentleman is that okay? So it is quite clear that if there is inbreeding, there are higher chances of genetic abnormalities. So I want to ask a question. If someone produces two children, still there will be some chances of genetic abnormalities, which is natural, smaller than in cousin marriages. However, if there is a cousin marriage and there are 6 children from the marriage, would they be able to have more than 2 children who will be quite capable? Yes, can We I were not. answer? Can I Jay answer? Murthy ji, I was not able to make out the question, but if you are, please go ahead. No, I understood his question. You see, every disease which is transmitted is an X-linked disease because it's an XY transmission. It's from the genetic chromosomal material. Okay, so each chromosome has a codon formation. It's a 3 ACG GCU. There are 3 codons which are small genetic material, and when this codon is available on 2 alleles, on 2 parts of the genetic on DNA chain, when it's on the 2 sides of the DNA chain, that makes it dominant. And if we have usually seen, for example, we have Mongol child or other child, so it can be possible that all the 6 children can have, or so that's why Gregor Mendel's experiment, which was a law of independent assortment, which says that if it is not given in one generation, it can present in another generation. It's not important. If my grandfather might be tall, my father might be short, I might become tall. So that's also a possibility. So the disease can transmit in another, in the next generation, only if it becomes a dominant gene and if it can express itself. So I think your question is I valid, think and G if Murthy ji, his question was something different. I think he was wanting to ask no, you he was if asking for I'm six. If he has 6 children, so he was asking the distribution of the disease.
if it can No. get distributed That is and Okay, not so what get he is asking. diluted. okay, let's get it clarification from agent itself. He's there on the panel, so he can clarify. Agent, can you repeat your question Yeah. again? So my question is, let's say X community has one or two children and they don't do inbreeding and they have less chances of having illnesses which come from inbreeding. You can still have a lot of genetic disorders or hereditary disorders which are not due to inbreeding. There's always a probability. However, if you have inbreeding, which is a cousin marriage, then you have higher chances of a certain kind of illnesses. And I want to know if Y community has a fertility of say 6 compared to X community of 1.5. So out of those 6, what is the probability that 2 or 3 would not have the illness? Andolanji, I just came up to, Uh, I was about to sleep now. I just came up to ask Agent G, what was he thinking to arrive at this question? Like, I wanted I'll to tell you. understand the I process, got how the he question. arrived at I this got question. the question. What he's saying, if It was a X funny community, question. yeah, it's a funny, interesting question, not a funny question. No, there are no funny questions, but he thinks it's a genuine question, and I also believe so. What he's asking, if an X community is having an average of 6 kids each in the family, the other community is having 2 children per family, and let's say 4 out of these 6 kids are perfectly normal, 2 are abnormal. But it's still, that community is better off than the one having 2 normal children, right? So, that's what probably is Yeah, indicating that to. was the question, Yeah. but Yeah, that was yes, just that is correct. I do Yeah. apologize if my question looks funny, No, but no, I it's am okay. in a It's naughty no mood. I questions asked. apologize. Yeah, no, that's the, what happens, agency. What we are worried about is not the community right now. What we are worried more about, the kids who are gonna live 60, 70, 80 years of their life with this kind of abnormalities. Even if it is one among 10 and that could be avoided, the focus is not currently in this forum on building community where even if 3 people are not living a normal life, it is okay as long as the community is strong. No, that's not the modus operandi of the discussion. So we'll move forward to Muskanji, your opening comments on the topic. I cannot see Muskan, so probably I am that. Even I am not Okay, able so to. probably I haven't refreshed, so Can I she's there. ask another question if everyone is Just preparing? so agent, maybe we were just taking opening remarks, so maybe let's go through a round of opening remarks and then we'll open it to Q&As. So what is your agent? If you want, you can put your opening remarks, whether you think that is right to have first cousin marriage or not right, and maybe take 30 seconds, 60 seconds to give your personal perspective on this topic, if you want to. Then we move Of on to I course. am that. Yeah. I would say that, like, I come from a community where you can't have a marriage in the same gotra, your mother's gotra, or your father's gotra, or your grandparents' gotra. That's like 8 people in your village and in your parents' village, in your grandparents' villages. So there is a strict rule to stop these genetic hereditary illnesses from accumulating. So in my view, that sort of rule has served my community quite well over centuries and has allowed them to survive some difficult hostile invasions and stuff. So I am not in favor of cousin marriages, though the question comes is where is it a legal question or is it a societal question how we regulate it or we don't regulate it. So that is a open question. Right. So we have thankfully Gyanji also, who would give an legal perspective to this in India. But before we go to Gyanji, we've have I am that have his opening remarks. I am that you're not audible. It appears there's some glitch. You might have to exit and enter. Okay. So meanwhile, Gyanji, good to see you after a very long time. I think we are sharing panel after a very, very long time. Yeah. So, So Gyanji, your opening remark, and since you are wearing a legal coat and tie, so maybe if you can give a bit of legal perspective on this.
As we all know that India is a country with personal civil laws. We don't have an uniform civil code, civil code till date, despite the provision existing in the Constitution of India via Article 44. So here in India, as per Hindu law, there is a prohibited degree and a sapinda relationship. So if a boy and a girl fall within that prohibited degree, the marriage is void, and same is the case with the sapinda relationship. Sapinda relationship means belonging to the same pinda, same kul, same Maternal khandan. side. No, no, not maternal side. Sapinda is connected with the pindadan. Okay. So, so that kind of thing. And prohibited degrees, as per the Hindu Marriage Act, five generations from the side of father and 3 generations from the side of mother. These are the prohibited degrees. So if there is a relation between the boy and the girl of that nature, then that marriage is void. But so far as Muslim law is concerned and other Abrahamic faiths are concerned, they can marry even their own real sister from the same father if that sister has not consumed the milk of the same mother. So Can you re-explain? yeah, suppose a man is having 4 wives, and from first wife he is having a boy, Okay. and from second wife he is having uh, uh, a girl child. Okay. And if that girl child has not consumed the milk, or that girl child has not been breastfed by the first wife from whom this boy was born, then marriage between that boy and girl is valid under Muslim law. वाह तो दूध का आई रिश्ता होता है. अच्छा ये मेरे को भी नहीं दूध पता का था मुझे रिश्ता लगा होता था है. कि हाँ ओके नो इवन नो इफ नो बाई सर, दूध बचाना होता है I can उन्हें। verify that. I can verify अच्छा या that. आई दूध वाज बचाना ऑलवेज होता है। अंडर impression that it is the same father should not be there and same something like that. नहीं, नहीं आंदोलन जी, वो दूध बचाना होता है उसमें। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा-सा पीछे जाएँगे सऊदी हिस्ट्री में, तो उसमें ये भी था कि अ वुमन कैन नॉट ट्रैवल विदाउट अ मैन और अनलेस एंड अनटिल दैट पर्सन इज़ हर हस्बैंड और सन। तो उसमें ड्राइवर में कुछ तो ड्राइवर नहीं है तो क्या मेहराम. करेंगी? तो देयर वाज़ अ लॉट ऑफ आई डू नॉट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट ड्राइवर को उन्होंने अपना सन बना लिया था। ऐसे किया था उन्होंने। और सन कैसे बनाते हैं सोसाइटी में दैट वी तो, ऑल नो, सो आई तो वोंट ब्रेस्ट कमेंट बिकॉज़ फीडिंग इट्स से इज वेरी इट वेरी डिस्गस्टिंग। हम्म, Yes, sir. मैंने ये same चीज तो पढ़ी थी in a बट fatwa चलिए वो for इस where a इससे woman was इससे supposed थोड़ा सा to. आगे बढ़ते हैं हाँ लीगल बैलेंस पे लेट्स स्टिक टू फर्स्ट कजन मैरिजेस बट दिस इज नॉट इवन फर्स्ट कजन दिस इज द सेम फादर सो इट्स नॉट इवन real फर्स्ट कजन sister. राइट आई Real sister is there. So we have the relationship of blood, and they have the relationship of breastfed mother. So the issue here is when it comes to the science, I तो feel that it's तो ज्ञान भाई आजकल तो हाँ, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग बहुत कम होगी अगर कोई फार्मूला पी के बच्चा मतलब पला बड़ा है तो मतलब वो आपस में भी भाई बहन शादी कर सकता है जस्ट आस्किंग ऑन अ लाइटर साइड नहीं बट देयर ऐसा है अगेन ना, ऐसा है, हदीस है मतलब आंदोलन जी, हदीस है कि जैसे इनके यहाँ एडॉप्शन का भी कंसेप्ट नहीं होता, तो जैद जो था मोहम्मद साहब का, उन्होंने वो बेटा माना था अपना, और वो जैद की वाइफ फिर उन्हें पसंद आ गई तो उससे उन्होंने शादी कर ली. गुलाम था वो पहले जैद, तो ओके फिर वो जो शादी के बाद में उनकी मम्मी हो गई वो, ओके एज पर इस्लामिक लॉ. ओके ठीक है तो चलिए इस पे ओपनिंग स्टेटमेंट ले लिया आई वर यू एबल टू स्पीक आई डोंट थिंक यू वर एबल टू स्पीक सो विल गो टू आई हाँ नहीं सर मेरे को 2 मिनट दीजिए, मैं 2 मिनट में अच्छा तो हम लोग I'll speak after the हाँ next हम speaker. लोग रॉबिन जी के पास चलते हैं तो अभी हम लोग केवल ओपनिंग स्टेटमेंट्स ले रहे हैं तो कीप इट लिमिटेड टू मे बी 60 odd seconds 60-90 seconds and then we'll go to a detailed discussion subsequent to the opening round. Robin ji, over to you.
हाँ, मैं जैसे ये बोल रहा हूँ कि करीब-करीब सभी ने एक चीज़ बोला होगा कि जैसे आपस में एक तो शादी-वादी करना जो भी है, आपस में रिश्ते बनाना देखा है तो ये जेनेटिक फ़र्क तो पड़ता ही है। बच्चों में आने वाले टाइम में जो होता है, ये आप लोग करीब सभी ने बोला होगा कि कोई शारीरिक तौर पे वो होता है कि किसी कुछ अंग खराब हो जाए, ऐसा कुछ होता है। तो अपने यहाँ तो एक सिस्टम है कि जो गुरु पर्व क्या बोलते हैं कि एक कुल में या जो बोलते हैं ना कि जैसे एक ही गोत्र में तो अगर बहुत दूर दूर तक शादी नहीं की जा सकती, तो वो एक सिस्टम है देखा है कि ब्लड का ब्लड में मिलना नहीं चाहिए। लेकिन जैसे अब इनके यहाँ पर थोड़ा सा इन लोगों ने एक चीज़ वो कर रखा है कि रजाई भाई बहन पे इसको बोलते हैं, दूध भाई जो दूध वाला जो ज्ञान सर ने भी कहा था। तो मैंने इसमें एक चीज़ और भी पढ़ा है कि आड़ होता है। Thank you so much. First of But all, let to us make a अगर distinction आड़ हटा between आड़ मतलब समझ रहे हैं ना, तुलसीदास, बीच में one हाँ जो जी, term बीच से like टेकिंग गैप नेम पड़ रहा है, आड़ consanguinity तुलसीदास तो जी, आप उसको and the हाँ other is inbreeding. We often use both of them synonymously, but both सर of मेरी them do आवाज़ आ not रही है क्या? exactly the same. हेलो? हाँ रॉबिन जी, अब आपकी आवाज आई वापस लौट के, पर हाँ, मैं तुलसीदास जी खत्म कर लेते, हाँ, फिर आप ओके, ओके, वापस ओके, आ ओके, जाइए। ओके, हाँ ओके, ओके। So the marriage between two persons who are related through one or more common ancestors is called consanguineous marriage. But on the other hand, the term inbreeding refers to mating within a Mendelian population. Mendelian population is basically a population which has a similar set of gene pool. So if we say yes, we do practice inbreeding. For example, even caste endogamy comes under the category of inbreeding, but it cannot be called consanguineous marriage. So, therefore, it is better to say that marriages between closely related persons, by closely I mean who are biologically closely related, come under the category of consanguineous marriage. हाँ, Now, इसीलिए मैंने going into टॉपिक तुलसीदास जी फर्स्ट कजन मैरिज लिखा हुआ है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक, exactly, बायोलॉजिकली प्रूवन टू बी द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक। exactly, एक exactly. एक एक और चीज है यहाँ पे, वी कैन कनेक्ट दिस थिंग टू द वर्ण व्यवस्था। इसमें क्या है कि अगर मान लीजिएगा जैसे सेम कास्ट मैरिज हमारे यहाँ होती है जनरली, अब तक होती थी। अब मान लीजिएगा आपने किसी म्लेच्छ से शादी करी, जहाँ पे वो एक फर्स्ट कजिन मैरिज होती है, ये तो वो प्रॉब्लम आपके जनरेशन में आ सकती है। तो हमारे यहाँ जो है सनातन में एक बैलेंस रखा गया कि एक तो भैया अपने तुम गोत्र में मत करो, और फिर इतनी दूर भी मत जाओ कि पता चला उन लोगों में चले गए जो बीमारी लेके फिर रहे हैं। तो दिस इज द बैलेंस। जी जी जी, तो तुलसीदास जी, ओवर टू यू, आप अपना पॉइंट hmm, रख लीजिए। हाँ going into the historical perspective, like in ancient times, we had the pharaohs of Egypt and the royal families of the Inca society, where marriages of brothers and sisters were favored just to maintain the purity of royal blood. However, now such marriages are not in practice in any of the societies. When we call consanguineous marriages, as you said, Andolanji, actually three categories of marriages come under it. First is the marriages of first cousin, second cousin, and the third cousin. Now coming to the effects of consanguinity, like what genetic effects does consanguinity leads to? So it would sound a bit technical, but I would take my speech forward. Consanguinity basically changes the genotypic frequencies. It actually increases the proportion of homozygotes, and thus the genotypic variability of any gene pool decreases. और जब भी आपकी डाइवर्सिटी कम होती है और आपकी होमोजाइगोसिटी बढ़ जाती है, सो डेफिनेटली यू आर वेरी लेस कैपेबल कंपेयर टू दोज जेनेटिक पूल्स जिनकी डाइवर्सिटी ज्यादा है। क्योंकि अगर आप इसको नेचर के एग्जाम्पल से भी देखेंगे कि किसी भी एरिया में अगर डाइवर्सिटी किसी भी चीज की ज्यादा है, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, सो देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ कैरिंग देमसेल्व्स टू द नेक्स्ट जनरेशन विल बी रिलेटिवली हाई।
And many studies have revealed that the rate of mortality among children of first cousin marriages is higher than that among children of the marriages between unrelated persons. Similarly, the frequencies of diseases, physical defect, mental defect are more among the offspring of the first cousin marriages as compared to the offspring of unrelated persons. Similar results have been also reported if you take the example of length and weight of infants. There is high prevalence of stunting and wasting in the offsprings of first cousin marriages. The reason is the genetic load. The genetic load basically refers to all the discrepancies in the genetic pool, which are relatively high, and it actually results in the reduction of fitness in terms of mortality, morbidity, and even there are cases of sterility. As the number and proportion of homozygous offspring are relatively high for consanguineous marriage offspring, thus the rate of mortality and that of inherited diseases are relatively high for the case of first cousin marriage. So I would restrict my first opening remarks till here. Thank you. Yeah, thank you, Tulsidas ji. It was quite informative. Manish ji, सर मुझे चांस दे दो ना सर। हाँ सर सॉरी, मैं हम लोग रॉबिन जी को मिस कर गए थे, हाँ। ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच। सॉरी रॉबिन जी, आप कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना, देखिए ना। अब आ रही है सर। हाँ हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने एक जगह पढ़ा हुआ था उसको मैंने काफ़ी लंबा उससे पढ़ा था कि जो जानवरों में भी एक सिस्टम होता है कि ये लोग जो आपने देखा होगा कभी निशान बनाते हुए, तो इसमें दो कारण होते हैं कि अपना एरिया भी करते हैं, दूसरी बात अपने अपने एरिया के अंदर जो होते हैं उनसे ही लोग रिश्ता बनाना कोशिश नहीं करते हैं, कोशिश नहीं करते बाहर जाना। अब हम लोग क्या करते हैं, इंसानों पे आते हैं, तो हमारे में भी देख जो गोत्र परंपरा सीधे से सिस्टम यही है कि गोत्र का मतलब ही होता है डीएनए से वाला जो सिस्टम है कि आपस में ना हो, जिससे कि बीमारियां ना हो, बीमारियां फैले ना, बाहर जो भी है सब निकले। ये एक सिस्टम है जो इंसान ने उसमें बनाया है। अब हम लोग थोड़ा सा अगर इनके उसमें जाते हैं तो ये लोग तो खैर रिश्तों को इतने पास में रखा है, इसके लोग आपस में रिश्तों को जैसे वो बोलते हैं ना, ये दूध भाई वाला, जिसको हम लोग रजाई भाई बहन बोली लोग मानते हैं अपने आपस में। अगर आपका दूध का रिश्ता है उससे है तो ये जैसे तो वो रजाई भाई बहन में आता है, खून से ज़्यादा लोग दूध का मानते हैं। आप यहाँ तक माने कि जो चाची और मामी भी होती है, वो बीच में अगर मामा या चाचा नहीं है तो वो आड़ होता है, अगर वो भी बीच में नहीं है तो ये लोग उनसे भी विवाह कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपस में ही बहुत ज़्यादा उसमें रहते हैं। इसका ये लोग जो फ़ायदा बताते हैं कि हमारा जो संपत्ति नहीं बंटना या आपस में सब साथ में रहना है, जो देखा होगा आपने जो गेटो बना के रहते हैं, उसका ये लोग कारण बताते हैं। लेकिन जो मेन अगर हम लोग साइंस के तौर पे देखा जाए तो ये नुकसान होता ही है, लेकिन अब इनकी परंपरा के हिसाब से देखा जाए तो ये लोग को जो सोचना अलग है कि हमारे आपस में जो रहना है, बस इतना ही मेरे को कहना है। हेलो। अच्छा, इसमें एक बिफोर आई गो टू आई एम दैट जी, एक इसमें हम लोगों ने बायोलॉजिकल एस्पेक्ट डिस्कस करा है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज सोशल एस्पेक्ट एंड सेफ्टी ऑफ किड्स इन विद इन द फैमिली। तो क्या कहते हैं, मान लीजिए जैसे ये तो मान लिया कि बुआ की शादी हो गई, वही कोई और चली गई, जनरली पेट्रियार्कल सोसाइटी ज़्यादातर लोग उसमें फॉलो करते हैं, तो लड़की की शादी होती है तो वो बाहर चली जाती है। पर घर में जैसे भाई भाई लोग, जैसे खासकर ये आपका इंडिया जो कॉन्टिनेंट सब साउथ ईस्ट एशिया कॉन्टिनेंट है, इसमें जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट बहुत है। तो चाचे और क्या कहते हैं, सब घर में एक साथ ही रहते हैं। अगर if first cousin marriage is legit, right, then what about the safety of young kids within home, right? I mean, where let's say two brothers are staying, one has a daughter son, the other one has a daughter or a son, and which is socially acceptable to be a sexual partner, right? So is there a security concern also within the family moving forward? So probably we may also want to touch upon that aspect. Manish ji, over to you. I am that जी, मैं आपके पास आऊंगा, एक बार ओपनिंग स्टेटमेंट्स ले लेता हूँ। हाँ, तो मैं actually what I was saying is that it's well known fact that there is a lot of genetical problem because of family in cousins and this close relatives. That's well known fact. एक चीज आप आंदोलन जी आप कह रहे थे कि वो जेनेटिक डिजीज बच्चे 60-70 years will survive. वो होता नहीं है, वो दे सर्वाइव ओनली इन इंडिया less than 20, in western world 30-40, but under those circumstances where they require 24/7 care and proportionate of these kind of problem in children is very high in western world and other countries.
while in India it's still very low. That's the reason people don't So recognize that's a those. very interesting point, Manishi. I'll let you speak, but just to highlight this point that you have raised. So apart from biological issues and social, safety concerns, there is also a economic cost of, offsprings of a first cousin marriage. That's a higher rate of, genetic disorders leading to, hospitalization or health infrastructure money being spent on this. So, just to Also, highlight that. and Yeah. also you require 24/7 care. One of the family member, is totally involved in care of these children, and obviously somebody is involved, they can't be financially productive. So these kind of things happen, and in India these problems are not recognized. The reason is because our percentage of this problem in India is very very low, and we know the reason why it is low because एजुकेशन का यार नहीं एजुकेशन नहीं मतलब लो इसलिए भी है कि बिकॉज वो अपने गोत्रा सिस्टम का मैरिज है कि बहुत होता है कि एक सेमी गोत्रा में नहीं करना मैरिज तो दैट प्रिवेंट दैट many people escape inadvertently knowingly and knowingly marrying in the same family. So we don't recognize those problems, but this problem is increasing in India as well. Yeah. Yeah. Uh, I would say Uh, that it's not in the Western country. Yeah, Sorry, just 1 second. can Yeah, you make a comment, please? agent. Yeah, well, let us take the initial this thing, then we'll come to it. Dharamveer ji, followed by Rajiv ji. Dharamveer ji, over to you. अरे But just आंदोलन जी, keep the I'm still opening here. remark limited to 60-90 seconds only, please. Huh? Okay, So then okay. we will Thank you. open it Thank for you. debate. Yeah. आंदोलन जी, Thank you, I'm still Andolan ji, here. and good evening, friends. Am I audible? Yes, sir. Then Yes, sir. I will stick to the marriage between first cousin and double risk of the birth defects, says researcher. Because the first cousin double the risk being the born with the birth defects. According to the study, the higher than the expected rate of death and cognitive abnormalities in the habit of the Pakistan community is due to marrying someone within your family, and this gene pool will further become dense with the recessive genes, and due to the both your genes getting added to the pool, making the possibility of your children having genetic abnormalities risk are very high. So marriage between close relative increases the chance of certain genetic concern, especially having a child with the recessive condition. You may remember that the biological classes of DNA is instructional manual that tells our body how to grow, how to develop, and how to work properly. Right. That's all. Thank Thank you. you, Dharamveer ji. We'll come to the next round, detailed round. But also my request to people who are having a difference of opinion and posting in chat rather than putting so much effort in typing, you're most welcome to come up and speak favor or in opposition of this. We'll go to Rajiv ji. आंदोलन जी, may I speak? आई एम दैट जी Yes, sir. थोड़ा सा Am I दो audible? दो तीन हमारे पास बस और बचे ओपनिंग स्टेटमेंट ले ले फिर फ्लैश ऑफ माइक से जिसको बोलना होगा वो हम तो लोग उसको मुझे भी लेंगे। ओपनिंग स्टेटमेंट देना सर। Yes. अच्छा आपने अभी नहीं तक दिया। ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं दिया क्या? मैं मिस कर गया क्या आपको? माय मिस्टेक चलिए, सर, go सॉरी ahead. I am that. Go ahead. After गो you अहेड, all come. सॉरी माय मिस्टेक इफ आई मिस्ड यू आउट, सॉरी प्लीज गो अहेड, आई एम दैट। यस सर। सो मेरे 2 पॉइंट रहेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज अराउंड द सेक्युलर इंसिडेंट्स की किस तरह से टोल होता है, ब्रॉड स्टैटिस्टिक्स, एंड सेकंड पॉइंट इज अराउंड व्हाई इट हैपेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक पॉइंट बहुत सही बोला कि इट टेक्स अ टोल, राइट? इट टेक्स टोल इन द इंफ्रास्ट्रक्चर टू द एक्सटेंट कि यूके में 60 to 70% of certain community, a country's community, is intermarried or consanguine or inbred, whatever you want to call it, to the to the extent that NHS itself is raising red flags. NHS is conducting डायरेक्टेड कैंपेन्स इन यूके कि भाई आप पाकिस्तानियों, आप आपस में शादी करना बंद करो, भाई माफ करो, मत करो, हमारे पास नहीं है इतना पैसा। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के पास इतना पैसा नहीं है कि उनकी कंट्री में छोटी सी एक माइनॉरिटी है, उसमें इतनी
प्रेवलेंट प्रॉब्लम है. सो इट्स अ वेरी बिग बिग इशू. और क्या पता इंडिया में भी ये है. वी हैव इनकम्प्लीट सर्वेज. दीज पीपल, यू नो, आई नो फॉर अ फैक्ट दैट, यू नो, आई हैड अ रिलेटिव इन हैदराबाद म्यूनिसिपलिटी, एंड दे सेड दे डोंट अलाउ हेल्थ वर्कर्स इन देयर गेटोज. तो इंडिया में भी हो सकता है. सो it's a huge cost to the medical infrastructure. It's a huge cost to the human capital of the country. आईक्यू पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कॉन्सैंग्विनिटी का. सो आपका कंट्री का ह्यूमन कैपिटल, आपकी कंट्री के रिसोर्सेज, हेल्थ केयर स्पेंडिंग, टैक्स मनी, सबके ऊपर बहुत बड़ा रिसोर्स है. सो आई थिंक इट्स एन इशू ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. नंबर टू, आई वुड लाइक टू कम टू व्हाई इट हैपेंस. सो मदर्स मिल्क की बात हुई. मैं आपको एक और बात बता दूं कि इट इज सुन्ना. सुन्ना इज एनीथिंग दैट प्रॉफिट मोहम्मद डिड इन हिज लाइफ टाइम. अब उन्होंने किया है तो उनके जो उनको फॉलो करने वाले हैं उनके लिए वो चीज़ ब्लेसेड हो जाती है. उन्होंने कहीं पत्थर फेंका तो पत्थर फेंकना अब ट्रेडिशन हो गया है मदीना में. उसी तरह से उन्होंने अपने कजन जैनाब बिन्त जश से शादी करी. यू नो, द स्टेप सन्स, द अडॉप्टेड सन्स. उनका अडॉप्टेड सन था, जो स्लेव था उनका अडॉप्टेड सन हो गया. उससे उन्होंने अपने कज़न की शादी करवा दी. और फिर एक बार उन्होंने अपने कज़न के ऊपर फिदा हो गए तो उन्होंने खुद कज़न से शादी कर ली. अब उन्होंने खुद अपने कज़न से शादी कर ली तो अब सारे मुस्लिम्स के लिए वो बहुत अच्छी बात हो गई है. सुन्ना हो गया, सुन्नत हो गई है वो. सो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट जस्ट कल्चरली. देखिए, कल्चरली अगर बोला जाता है तो भाई कल्चरली हिंदू, इंडिया और पाकिस्तान के हिंदू मुस्लिम कोई अलग नहीं है बहुत ज़्यादा. बट इंडिया हिंदू में इतने एक्सटेंट तक नहीं होती है. इंडिया के मुस्लिम्स में भी इतनी नहीं होती जितने वहाँ पर होती है. क्यों? क्योंकि सुन्नत है. So I think sunnat is a bigger reason than the mother's milk or anything cited before, and it directly stems from Muhammad's marriage to Zainab, who is considered the wife of Muhammad, companion of Muhammad, and the mother of believers. अच्छा, इसमें एक आई एम दैट जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. माय अंडरस्टैंडिंग इज दैट फर्स्ट कजन मैरिज in Pakistani Muslims is twice as prevalent as in India. Is that a correct statement to make? Yes, yes. It's around 70% of the Pakistani population are, involved in first cousin As marriage. They against did a survey. 31% in Indian Muslims, right? Yes, sir. Yes, sir. और ये कराची यूनिवर्सिटी की स्टडी है, so there is no scope of any fudging. वहाँ के अपने लोगों ने करी है. अच्छा, ये मैंने आप जो IQ वाला पॉइंट बोल रहे थे उसका एक पूरा रिसर्च रिपोर्ट है, वो भी मैंने ऊपर लगा दिया है. तो लेट मी नाउ गो टू राजीव जी, and after that Samar ji, and then Abu ji and Chana ji. Yeah, before I speak on the topic, I lodge strong protest against the use of word malech and also the implicit message in that they carry disease. This was obnoxious, very bad. But nobody used this word on the panel, Rajiv ji. I thought I heard. I No, think no, no, two no. I don't think guys. anybody used this word on the panel. No, It was used. Oh, is it? Yep. So, okay. I probably missed that. So, okay, go ahead, Rajiv. Well, Pakistanis have not only changed their religion; they have changed everything. Whatever we do, they do the opposite. I think the figure for Pakistan is 70. Then they beat the Arabs. Arabs, I think, is 45%. No, but even Saudi, And it is obviously, close to 70%, Rajiv. okay. So yeah. So now probably they are modeling themselves on Saudi and maybe Iran, Iraq. But I think Turkey must be low, and other Arabic countries, because I have read somewhere average is around 45. So obviously there are certain countries which are pulling down the average. But Uh, anyway, the point is that apart from we talked about physical or genetic problem, I think there is a huge mental problem as well, mental health issues, and that is going to be really detrimental to the society going forward. So I think that this system of Gotra was designed very scientifically, and because the mobility was very low in old times, so at least they devised this Gotra system so that at least we can have a better system of marriage and procreation. So a problem with Pakistan is I think
they change religion and then they try to show that they are really, really and different from Hindus. Whatever we do, they do the opposite. We write from left, they write from right. We start the book from top, they start from the bottom. We look east, normally they look west. Everything. So I don't know, and this is what is kind of doing them harm. I feel bad because after all, we are from the same stock, as Mr. Bhagwat would like us to believe, and probably also the DNA studies. So I feel bad for them, but then that's all I can do. Thank you. See, Rajiv said that don't we should not use that word Malich. Actually, this word Malich is from Shukraniti, and Shukraniti shloka number 44, which says that जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है और जो अन्यों को पीड़ा देते हैं और घृणा करते हैं, जो हिंसक प्रवृत्ति के हैं और अविवेकी हैं, वे मलेच्छ कहे जाते हैं. So it is not about a particular community or something like that. It is only concerned with the uncivilized people, and uncivilized can be anybody. Thank you. अच्छा, इसमें ज्ञान सर एक बार फिर से बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मलेच जो आपने 3-4 बताई थी. शुक्र नीति में श्लोक 44, मैं इसका संस्कृत भी पढ़ सकता हूँ. त्यक्त्वा स्वधर्माचरणा निर्घृणा परपीड़ का चंडाश्च हिंसका नित्यम म्लेच्छास्ते ह्राविवेकिनः. ऐसा है, कम्युनिस्टों ने कुछ इसका इंटरप्रिटेशन जो है मतलब कई जगह ऐसा कह दिया कि मलेच्छ का मतलब जो संस्कृत नहीं जानता, या जो उल्टा सीधा जो कुछ भी जैसे वो बकवास करते हैं. लेकिन मैं शास्त्र कोट कर रहा हूँ. शास्त्र में जो है शुक्र नीति में श्लोक नंबर 44, इसका हिंदी मीनिंग ये होता है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया, जो अन्यों को पीड़ा देते हैं और घृणा करते हैं, जो हिंसक प्रवृत्ति के हैं और अविवेकी हैं, वे म्लेच्छ कहे जाते हैं. सो इट इज अबाउट क्वालिटी. जैसे इंग्लिश में हम कह देते हैं बैड पर्सन, बारबेरियन, अनसिविलाइज्ड पर्सन. बेसिकली बारबेरियन. हाँ, बारबेरियन ओके, वही है. फेयर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. बैक टॉपिक. तो Well, समर जी, that's not the only meaning. अच्छा, इसमें हाँ राजीव जी, इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे. एक बार It's ओपनिंग about स्टेटमेंट्स मैंने, I am quoting from Shastras only. हाँ, शास्त्रार्थ. ठीक Meaning है of ज्ञान सर, lecture. विल हाँ, If you get we'll go something back to the else, then topic. you can quote that. Yeah, we'll go back to the topic. Samar ji, your opening statement on the topic. Samar, you are around? It seems he's not around. So we'll go to Abu, then Chana, and then Matoshri, and then we will, open up the panel for detailed discussion. Am I audible? And the best part is, this panel seems to be unanimous. I think this is the first topic that I'm doing where there is no challenge to, the session. Okay, Abuji, please go ahead. Thank you, Anganji, very much. Okay, when we talk about marriages between cousins or relatives, the most important thing that increases and that needs to be discussed is inbreeding depression. Now, what happens whenever there's a marriage or intercourse between two related individuals and the progeny that is the resultant of that intercourse that comes into origin, the progeny suffers from a thing that is known as inbreeding depression, and that this inbreeding depression is not only limited to physiological derangements, but it also affects the mental and thinking capacities of the individual produced. The individual that suffers from inbreeding depression, they are psychics. They suffer from mental depression, suicidal tendencies. Their brain does not function properly. They cannot analyze things properly. They are not rational. They run toward irrationality, and hence we see that from those communities don't produce good scientists, they don't produce good engineers, they don't produce good doctors. This is very significant feature of those societies that practice inbreeding.
and because of this inbreeding depression and its harmful effect on thinking abilities of the individuals, we can see the most of the such individuals, they suffer from suicidal tendencies and hence prefer to kill others and themselves also. Thank you. Yeah. Uh, Chanaji, Matoshri, Ram, and then we'll open up the debate. Chana. Yeah, sorry. Yeah, I really, I don't know what else to add to it. This is a pretty old subject. I read it on like years ago on Reddit, and it was a big news. I'm still looking for that article where they were like, it was from the Dawn, that 70% of Pakistani population is from first cousin marriage. So it's pretty common. And I even asked the Pakistani people, and they said, yeah, it's nothing, no big deal. And within the Quranic scriptures, it's quite detailed. They have been mandated. Uh, I think it's Quran Al Nisa, where they have like Muhammad has like given a clear cut who are restricted. These are the women's. I think the first mothers, daughters, and fathers, sisters, so, something of that sort. And after then, all women are you can have them all. So if it's your like first cousin, second cousin, anyone, so it's quite common there. And so incest is nothing of like a subject that is taboo, and they clearly don't really have much concern for what the modern day science have to say about the genetic inbreeding that leads to several genetic disorders that lead to mental disorder, that is which the rest of the world takes it very seriously. But for them, they clearly they reject the idea. I mean, if even if you go to Pakistan, they see conspiracy in polio drops. They have no concern for like what happens to the little child afterwards. They are more concerned with whether the child would be able to reproduce more properly, as as what is like the ultimate goal of every moment born on this planet is to breed and breed and just create a swine, in a pigsty, just playing with its feces and just do about whatever comes to its instincts. Oh, that's what they are. And they surely don't like to talk about it, but that's what they are. And yeah, anyway, am I audible? Hello, hello. Yeah. Loud and clear. Loud and clear. Yeah. So yeah, that's all I have to Yeah. say. Thanks, Chanari, for your opening statement. Matoshri. या हाय, मेरी आवाज आ रही है? Am I audible? भाई Yeah. कभी Yeah. तो Yeah. हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ तो बोला बस कर। मनन, कैसे यार अनपढ़, मनन देखो पहले, कैसे नहीं नहीं जाहिल पहले मेरे को अनपढ़ बोलने दो। अरे गवार। यार मनन That's मुझे बोलने not दो, your turn, मेरे Manan. मेरे बोलने के टाइम पे। हाँ हिंदू मनन प्लीज लेट मी स्पीक ना। हाँ, So I've हिंदू moved him मुस्लिम baक to बाद में audience. करेंगे। हाँ. हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, पॉइंट पे बात हो रही है। तो इट्स अ वेरी और नाइस हो भी टॉपिक रहा है, बट so it is what is wrong in discussing any issue in हाँ the planet, एग्जैक्टली, right? नो I mean, देयर इज what's नो the रॉन्ग, problem? ये एग्जैक्टली तो बारे एग्जैक्टली वाले आ देयर गए इज क्या? हाँ, मतलब why these people have a closed mindset even for discussions, right? Are we doing any violent discussion Matoshi, over here? हाँ Matoshi, Matoshi, हाँ हाँ before you go, can I take 10 seconds, Andolan ji, with your permission? हाँ Okay, हाँ I जी. श्योर think, बेटे। हाँ मुझे बस 10 सेकंड चाहिए एक्चुअली। ये जब मनन आके ऐसा करे ना तो इसके साथ ना सिंपैथाइज करना चाहिए। एक्चुअली मुझे पता चला है कि ये एक मानसिक रोग से पीड़ित है, जिसकी वजह से इसका दिमाग हाँ. खराब हो गया और ये लोगों को गाली देता रहता है। ठीक है तो इसलिए सूरज जी, थोड़ा if it सिंपैथाइज is, करिए, इसको नहीं, ऐसे मत I बोलिए। normally do या not बस मुझे 10 हाँ. सेकंड इतना ही लेना था बस। हाँ जी, मैं अगर कोई हाँ मानसिक रूप से पीड़ित भी है तो वी विल नॉट शेम हिम पब्लिकली. इट्स ओके, विल मूव फॉरवर्ड. हाँ, मातोश्री, ओवर टू यू. Yeah, thank you so much. Well, first cousin marriage deform your next generation. नेक्स्ट जनरेशन होता ही कहाँ है? मतलब आप अपने ही आवाज धीरे मुझे ही आ रही है, सबको आ रही है? हाँ, थोड़ा सा माइक के मातोश्री नजदीक आ वॉल्यूम जाइए में मातोश्री. Am I audible? या यस। Okay. हाँ लाउड में
या ओके थैंक्स मुकुल। तो माय पॉइंट इज दैट कि जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए आपको तो दूसरे जनरेशन के भी किसी से निकाह करके इंटरकोर्स करना पड़ेगा ना। आप एक ही घर में वो जैसे होते इवन एक मतलब घोड़ा भी शायद मतलब एनिमल्स आल्सो डोंट डू सेक्स विद देयर इंटरकोर्स विद देयर सिस्टर आई थिंक सो। उनमें भी एक बेसिक कॉमन सेंस है कि हमको अपनी प्रजा आगे बढ़ानी है। वेल मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप अगर एक ही फैमिली के साथ आप फर्स्ट कजिन, सेकंड कजिन, थर्ड कजिन, माता पिता आप जो भी कर रहे हो, मतलब आई नो दैट योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गोल इज कि आप बच्चा जैसे जैसे करके प्रोड्यूस करो, इट्स ऑल राइट फाइन। लेकिन जनरेशन आप जो बढ़ा रहे हो उसका फ्यूचर क्या है? नील बटा सन्नाटा, जीरो। फिर एडुकेशन भी कहाँ होती है? जीरो होती है। आपका तो यार मतलब ये तो साइंस से भी परे है ना। मतलब फादर का जो जीन्स है एंड मदर का जो जीन्स है वो तो होके फिर ये हमारी बॉडीज में जितने भी हिंदू है हम सबके पिता के भी अलग जीन्स है, मदर के भी अलग जीन्स, देन वी हैड प्रोड्यूस्ड, देन वी आर प्रोड्यूस्ड, राइट। हम में भी अगर वही सेम जीन्स हो गए तो मतलब व्हाट इज द न्यू थिंग टू ग्रो? जीरो। अगर किसी पिता की आईक्यू लेवल जीरो हो, मतलब मैं इनकी बात कर रही हूँ, और माता की भी आईक्यू लेवल जीरो, तो बच्चे भी तो जीरो ही निकलेंगे ना। तो इसलिए आप देखो इनका एक ही फोकस पॉइंट रहता है बम बम करके फटना। इनका और कोई फोकस पॉइंट होता भी नहीं है क्योंकि हाँ, जनरेशन चलिए ही थोड़ा सा टॉपिक पे आ जाते, ठीक है, दैट्स ओके। मैं हाँ टॉपिक पे स्टिक हूँ आंदोलन जी, कि आज अगर हमको जनरेशन को आगे बढ़ाना है, बुद्धि लानी है, तो मेरे हिसाब से बुद्धि माता पिता के को ही इंटरकोर्स करना चाहिए। वो फर्स्ट कजिन, सेकंड कजिन, थर्ड कजिन, फोर्थ कजिन के साथ नहीं करना चाहिए। जी मेरा यही पॉइंट था। बच्चे पैदा करना ही सिर्फ नहीं होता है, जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए उनको शिक्षित करना भी पड़ता है। जी धन्यवाद। जी जी, सूरज जी आप ओपनिंग स्टेटमेंट दे दीजिए। दीप्ति जी और निशामानंद से ले लेते हैं, उसके बाद फिर राउंड ओपन कर देते हैं। सूरज जी। ऑन लाइटर नोट, वैसे शिक्षा जरूर की आवश्यकता क्या है? वैसे ही रहो, जानवरों की तरह, क्या जरूरत है? सूरज जी लगता है नहीं। दीप्ति जी, your voice is very low, Deepti ji. Could you be a bit louder or closer to the handset or mic? Still very, very low. Can you just try to fix it and we'll go to Nishamanan and come back to you? Yeah, Nishamanan. Nishamanan, you're there? Yeah, yeah, can yeah, just give me Okay. some 5 minutes. I'll ठीक है. So now let me open the floor, and now it is not a PTR. We just wanted to have some opening statements. Couple of questions which seems relevant, which have come in the chat, while people have chosen not to come. And let me play the devil's advocate. पीपल आर सेइंग कि भाई पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा फर्स्ट कज़न मैरिज होती है, लेकिन उनका एवरेज आईक्यू जो है वो इंडिया के एवरेज आईक्यू के बराबर है, तो व्हाट्स द डिफरेंस फर्स्ट कज़न मैरिज इज मेकिंग, राइट? So that's that. I thought I'll throw that question, to the speaker panel. Anybody would like to take it? Yeah, Nuranji, I've already answered it in chat. I'll also want to Sure. answer it here. So, India mein abject poverty, extreme poverty is more than Pakistan, right? It has been Earlier, for yes, quite a but I while. think in the last Yes, IMF report, the it's last almost 8 years. yes. Last 8 years में ठीक है. But the thing is that we had more, right? Numbers में भी ज़्यादा थे. So क्या होता है कि देखिए, even if if entire India has a very low consanguinity rate and therefore potentially higher IQ, it is brought down by and it's not infant this thing. It's actually 0 to 5 years की एज में आपका न्यूट्रिशन कम होगा तो IQ कम हो जाती है and permanently for the rest of your life. So that factor brought us down. अब जैसे जैसे वो फैक्टर ऊपर आएगा, एज यू नो, अंडर मोदी गवर्नमेंट वी हैव सीन अ 10% डिक्रीज इन 10%, एज इन अर्लियर वी वर ऑलमोस्ट 20% abject poverty, extreme poverty, less than $2 a day. Now it is around 10%. तो 10% decrease आया है. So as that percentage keeps decreasing, we will see lower and lower impact of nutrition on IQ, and we will recover. So there's no harm in admitting what is there, but we have to understand that we are making progress. Okay. Now, क्या कहते हैं, किसी को भी अगर बोलना है इन अ डिटेल विल फ्लैश. दीप्ति जी, we missed you. दीप्ति जी, please take a go. Yeah, thank you very much. Andalanji, can you hear me? Yes, now you're loud and clear. Yeah, thank you. Pertaining to the topic, I think pretty much everything has been covered and why you should not be having incest.
Let me just quote an example of the study done in the savannas. There was this lion family, lion pride, which had just two male members, male lions, and the male lions were very aggressive and they wouldn't let any other lions come in. Usually, what happens is the male lions, they kind of, after they grow old, there is the other lions do come in. So this led to the weakening of the pride, and ultimately the pride did not survive. I mean, the for future generations could not make it; they couldn't survive, and studies showed that it was because of incest. It was greatly because of incest, not only because of incest. It was greatly because of incest. They're not being up to the mark, if I may say so. एंड जैसे ज्ञान सर कह रहे थे, शास्त्रों में भी हमारे कहा गया है कि जो इंसेस्ट करते हैं वो असुर प्रवृत्ति के होते हैं, उनको मल्लेच कहा जाता है। वो शापित लोग हैं जो ऐसी हरकतों में इन्वॉल्व होते हैं। एंड इफ यू आर अलाउइंग इट एज अ सोसाइटी, आई थिंक इट्स बेसिकली ये एक प्रवृत्ति की ही लोग जिनकी मानसिकता वैसे होती है वो ही लोग इस तरह के इस तरह की चीजों को अलाउ करते हैं। और शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जो पुराने जमाने में जो गुरुकुल होते थे, उनको भी वहां पे जो लोग पढ़ते थे एक साथ, उनको भी गुरु भाई गुरु बहन वैसे कहा जाता था। दे टू नॉट डू इट, दे टू नॉट मैरी विद इन द सेम गुरु फोल्ड ऑल्सो, maybe because of the environment, like many, like I think I That don't has know, more to do with the Pune, safety concern of the girl child. girl child as well, and the same environment. When you do not give environmental stimuli, even then the मानसिक डेवलपमेंट जो होता है या फिर फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो नहीं होता। I mean, when you give that stimuli, when you give a new environment that is given, the person has more this of development. So that could also be one reason. And like Anakji was saying that yeah, 0 to 5 years of age, nutrition is very important for children. Same way stimuli, but it is not the only cause. And also, if the children do not, because historically we have seen that India has not been a very prosperous country all throughout. There has been a lot of people have not had access to the best of nutrition, but still they have been their uh, lineage has been very good, and they have thrived, not just survived, they have thrived. They've done well in a lot of fields. So it is not just the nutrition, it is the quality of nutrition. As in, traditionally what we used to eat, even if that is given, children do tend to, receive it more well. If you're genetically tuned to receiving the nutrition well, you receive it more well than the external inputs, external food, new food that is introduced. And also, if from 0 to 5 it is not given, it's not like if it stops there, it stops there. The brain can always be trained. Environmental stimuli is also very important. And this is unfortunately not happening when you have incest, because you do not have the culture of another family, of another place which is coming in, and that external stimuli is not given to the children. And that is why they do not have that, they do not come to grips with the new faculties which is introduced by a new set of people. So that is a deprivation over there. And also, as known, a lot of the people who, I mean, it may not be there in the immediate generation. There is a gene jump. 2-3 generations later, it is seen. So if Pakistan is having 70% population, that is, I mean, from incest, God help them 2-3 generations down the line. Yeah, that's my point. And Surajji, please, I know Manan said a very wrong thing. Please counter him. Let us not use this mental illness thing as a counter to anyone, because mental illness is real and mental illness is also physical. It's not just mental. It is a physical faculty which needs to be treated. Let us not shame anyone because they have a mental illness. There's no need to sympathize. We have to understand that it is an illness just as like diabetes or BP is an illness. So please let us not shame anybody using the word depression or schizophrenia or whatever it is. Thank you. पॉइंट टेकन दीपक जी, एंड वैलिड पॉइंट। अच्छा, एक टॉपिक हम लोग ने मोस्टली बायोलॉजिकल और जेनेटिक डिसऑर्डर्स पे डिस्कस करा। व्हाट अबाउट सेफ्टी ऑफ द गर्ल चाइल्ड विद इन द फैमिली फोल्ड?
is the first cousin marriage or the ecosystem of a first cousin marriage responsible for lack of safety security within the family system, and is that also a reason behind the parda hijab kind of systems in various societies? This is also, we probably need to deliberate a bit more. And then, of course, the economic cost of inbreeding, as in the first cousin marriages, and the complications, health complication on the ecosystem as a overall. Nurul, So, can I answer to that? yeah, is it who? Nisha Manan? Yeah. Yes. Yeah, go ahead, Nisha. So I will try to address all the points. So first, starting with first cousin marriage, about the genetic health, almost everyone has said probably that the congenital disease increases a lot. It has been found that around, if it is just two generation different of the cousin, then it's then that time the congenital disease will be 1 out of the 16 times. So that means you are having a chance that any of your child will have any heart disease or lungs disease. So means something around 16%. And if it is just the first cousin, then if it is just the first cousin, means your very first cousin, then it goes to around 32%. And I'm not just giving the reports, it is the reports that has been published by the Tamil Nadu, the health committee report of 2021. If you go to any of the Tamil Nadu health specialists, they will say that from 2018 to 2021, there has been a major jump. Around 80 to 90% cases are coming with children having they having some defect of the heart and the lung, especially the coronary binocularosis, that we call that the aorta is not closing properly, and of that, which you can understand from which sect it is coming the most. Now coming to the other fact, if I'm not wrong, someone's talking about that the Pakistan does not face that problem. So the dear, you just check the infant mortality rate of Pakistan. It's just 10 times higher than India. So if the children are not being if the children are not surviving, so how can you say that they are not facing the problem? And about the IQ, there are three factors that is affecting the IQ. First, when there is this first cousin marriage, it has shown a dip up to 1 to 2%. Then, as I have mentioned, that due to the congenital disease, there will be always health problem. That will decrease your IQ, because you will never be fit to understand and read. And the third problem, as Andolan sir was mentioning, and probably the speaker before me has also mentioned that as you are having a same family, so you will not have the knowledge from both the side. You just have knowledge from one side. So that is another major problem of the decrease of the IQ. And the socio-economic effect, if you want to understand the socio-economic effect, just go to any of the families of the Sindh. You will find the 90% of the population of Sindh are poor, because they suffer from this calamity of marrying the first cousin, that is affecting them by having low IQ progenies, and also the working efficiency has also decreased something around, if I'm not wrong, it was last year, it has decreased by 10% or something like that. So it is also, and the security measures that Ramdan sir was mentioning is another factor. Yeah, I will end my point with this. या मुकुल जी एंड ज्ञान जी एंड अथर्वी जी, आप एक बार थोड़ा सा रेगुलेट कर लीजिए। मैं 2 मिनट में जरा इसमें एक आध नए आर्टिकल्स ऊपर ऐड कर देता हूँ, जिससे कि ये अपडेट होता रहे ऊपर वाला सेक्शन। सो whosoever wants to go next, I think Miss Raka hasn't spoken and Samar ji hasn't spoken. So Samar, if you're there in the panel, and Miss Raka, if you're there in the panel, if you would like to make comment, please open your mic and speak. Yeah, thank you, Andolan. I Welcome, would Samarji. love to listen Namaskar. first of all, then I will speak because I've recently joined. I was not available. Okay, Miss Raka, you are there? I think she's not there. She has sent a link. I'll just gonna paste it. ज्ञान जी, क्या कहते हैं,
is first cousin marriage illegal in Hindu marriage act, Yes, it is void. or it is void, Hmm. as in never solemnized, is it? If the marriage थोड़ा सा is इसमें within the prohibited degree. लीगल पर्सपेक्टिव थोड़ा सा कवर कर दीजिएगा, हिंदू मैरिज एक्ट, सिख मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज, अगर आपको इसके तीनों देखिए चारों जो ऐसा मेन। है कि सिख, जैन्स, बुद्धिस्ट एंड the people, the citizens of this country who do not belong to the Muslim community, Christian community, or Jew community, or Parsi community, all the citizens of this country are Hindu as per law, and Muslim Marriage Act defines that. So the definition of Hindu has been given in negation. A person who is not a Hindu, no, a person who is not a Muslim, Jew, Christian, or Parsi is a Hindu. This is the definition of Hindu in Hindu Marriage Act. So Sikhs are also covered by the same act, and although there is a separate act also by the name Anand Marriage Act, but the so far as the void status of the marriage is concerned, uh, if we speak in terms of religion or shastras, then we find that 7 generations from the side of father and 5 generations from the side of mother are prohibited degrees. But if we talk in terms of law, then as per the Hindu Marriage Act, 5 generations from the side of father and 3 generations from the side of mother are prohibited degrees. Yeah, And that then there was is my understanding was, yeah. and then there is Sapinda relationship. If you fall within the same pind, means a person who is entitled to do pindadan for his father or mother. So if you fall within that ambit, then that marriage is also void. So this is the legal situation. And so far as these Abrahamic faiths are concerned, they have got their own personal laws, as I told, that under Islamic law or Muslim law, which is prevalent in this country, they can marry their own sister also from the same father if this sister has taken birth from a separate wife, and she has not consumed the milk of the mother of the boy. So there is a relationship of milk only, breastfeeding, and therefore you will find many places that this incestuous relationships, they are more prevalent in Abrahamic faiths, and especially if you see sociologically or say it legally, the offenses of rape and all these kind of sexual offenses are much more prevalent in these communities, because a social barrier is not there. They cannot look towards the girl as a I should say a prohibited degree, as a prohibited relationship. They don't look in that way. So the problems are there, and therefore there is a culture of parda and burqa and all this and that. The reason behind this parda, burqa, hijab is that since there is no rational, no reason of prohibited degrees or sapinda relationship, therefore they adopt these artificial ways to check the things. But it's not inculcated in their sanskars or sacraments, and they don't get it from the birth. That's the problem. Yeah, Andolanji, I would just Absolutely like to well add said, on to the sir. point you were I making would like to, earlier. yes, please go ahead. Then I'll No, no, Mukulji, Yeah, please go ahead. so Mukulji, please I'm go ahead. that. Mukul ji, Mukul ji, Mukulji, go ahead. please go ahead. Thank you. Thank you. एक रिपोर्ट में आपके समक्ष मतलब रखना चाहूंगा। ये वियो न्यूज की है और मैं पढ़ते हुए ये कोट कर रहा हूँ। मोर देन आपकी आवाज थोड़ी सी 82% ऑफ साफ द कम आ रेपिस्ट। रही, मुकुल जी, एक बार थोड़ा सा वो कनेक्शन देखेंगे। हाँ जी सर, लेट अस गो टू आई हाँ, आई अब हाइट बेटर है, अब बेटर है, यू कैन स्पीक आई नाउ। गेट दैट। बेटर है, थैंक यू सर। हाँ, मैं बोलता हूँ। More than 82% of the rapists are fathers or the brothers of the victims in Pakistan. Lawmaker, ये lawmaker कौन था, मैं आपको इसके बारे में भी मतलब बताता हूँ। A Pakistani lawyer has claimed that lawmaker, sorry, not lawyer, has claimed that 82% of the rape perpetrators in Pakistan
are family members of the victims, such as that includes fathers, brothers, grandfathers, and uncles of the rape survivors. Speaking on the TV, Shahanda Gulzar Khan quoted figures by the rights groups of War on Rape, said the most family members are involved in the rapes of the girls. तो सबसे बड़ी विपदा क्या हो जाती है, इनकी भी मंशा पे हमें सवाल उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है, सवाल उठाना चाहिए कि ये किस कंसेंट के साथ अपने ही बहन बेटियों को रेप कर रहे हैं. एंड आई एम कोटिंग these figures from पाकिस्तान. ये 2018 की रिपोर्ट है. मुकुल जी 1 सेकंड. Over to you, भाई. आंदोलन जी हाँ, उनको खत्म कर लेने दीजिए. नहीं, ये मनन जो बंदा है ना, नहीं, चैट में I'm देखिए, done, sir. ये कुछ ज्यादा That's ही okay. We'll throw him out if required. We'll throw him out. सर वो रेप के बारे में बात कर रहा है. अच्छा, I'll just review and throw him out. नो, वो अगर मुझे बोल रहे तो प्लीज रहने दीजिए. अगर उससे उसकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है. जी, मैं उसको रिव्यू कर लूंगा. हाँ, मुकुल जी आप कंटिन्यू करिए. हाँ सर, तो इससे ये जो रेप परपेट्रेटर्स हैं, जो 82% मतलब जो रेप हो रहे हैं पाकिस्तान में आज की तारीख में, ये एक तरह से इट्स अ वेरी डिप्लोरेबल थिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर रिक्वायर्ड टू क्वेश्चन देयर इंस्टिंक्ट. हमें इनकी मंशा पे भी सवाल उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि 82% जो रेप हो रहे हैं पाकिस्तान में, अभी मेरे पास पूरी कम्युनिटीज का डेटा अवेलेबल नहीं है, जो कि मैं थोड़ी देर में प्रस्तुत करूंगा. आई एम फाइंडिंग इट. तो इसके ऊपर सवाल उठाना बहुत ज्यादा अति आवश्यक हो जाता है कि सिंस वी आर टॉकिंग इन अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव और वी आर पॉइंटिंग आउट द इमेंस ऑड्स ऑफ सोसाइटीज हियर. तो पॉइंटिंग आउट होना, इसके ऊपर मतलब सवाल उठाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, इनकी मंशा पर खासकर. ये किस मंशा से अपनी बहन बेटियों का रेप कर रहे हैं. एंड आई एम कोटिंग दिस फ्रॉम बियॉन्ड न्यूज. थैंक यू वेरी मच. ओवर टू यू. हाय बाय. Anurji, can I just add a point to that? हाँ, कर दीजिए साहब, कर दीजिए. You all can check my DP, I just put a report out there that shows that 43% of the American Muslims are suffering from any sorts of mental illness. This is the report that has 43%. just check my DP. Just check my DP. Yes, sir. Even I was about to quote that. Please go ahead, Mr. Aman. 43%. So of which Whoa. there are some. I am just saying the percentage out here. Of which Can adjustment you disorder please, is around Nisha Manan, 40. can you please elaborate on adjustment disorder? Yeah, What does it? adjustment disorder means when you can't adjust with the family, means you are thinking that my father is bad, so I just want to leave my house and I want to go away. That is around 46%. Then there is anxiety disorder, that is around 13%. But that is like adjustment can be just cultural as well, generation gap between people and everything. Oh, I don't Yeah, want to live that in can a be, joint that can family be. anymore. Those Yeah, kind of that stuff can be. can But also arise. when we talk about adjustment disorder, means this persons are little. Also, Mr. Manan please elaborate the medical and the health perspective of this particular issue. Over to you, sir. Okay. Please go ahead. So first, I'm starting with the adjustment disorder. In adjustment disorder, means in this kind of adjustment disorder, what I am saying is this something that is very peculiar and static, where you can even kill your father and mother. That's why you will find that last year, not last year, 2019, there was report that some 15 or 16% of the Muslims that were being killed in America were killed by their children. This is the severe impact of adjustment disorder, that is around 43%. Then there is adjustment of anxiety disorder. This anxiety disorder is totally related to your family matters, and where this inbreeding makes a huge impact, because whenever there is an inbreeding, there is found that the family people are very close to, and that lead to inbreeding, that anxiety disorder, that is around 19 to 20%. Then there are disorders like, then there are some muscle disorders. This is a specific kind of disorder where your brain and your muscle or your hand, means the whole body muscle does not act properly. Means your brain is saying that you want to run, but your body muscle is saying no, just stand, just be in a standstill. So this kind of people, like in the movies that are shown, that they are just standing and the train just drag them down.
this happens due to muscle imbalance and muscle disorder. And there are cases being reported in America which is happening. So these are just a few. If I may start just saying that, then there is another, the rhythmic disorder. Rhythmic disorder is around 36 to 38% rhythmic disorder, where does not have any rhythm of your body. Means this generally the person means the children who are suffering from rhythmic disorder, they can't even be a part of the schooling because their mental rhythms are not in perfect places. So they can't understand how to study and But all. 43% is a huge number. Yeah, that is what the problem is. That is why even the Americans are looking onto it, that why this problem and how to get over it. And the special problem with it is especially the person who are the US public out there, means the Muslim public out there. The cases are less, especially the cases increase with the inhabitants, means the persons who are going there. So yeah. That's even news to me. Even I never looked at this data at this level of problem exists. Miss Raka, प्रमोद जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? मिस राका शायद है नहीं. मैं प्रमोद जी के पास चल दूंगा. प्रमोद जी, ये फर्स्ट कजिन मैरिज पे हम लोग आज चर्चा कर रहे थे. हम लोगों ने 2-3 एरियाज पे इस विषय पे चर्चा करी है. एक तो बायोलॉजिकल इश्यूज जो होते हैं, कई लोगों ने हाईलाइट करे हैं. जो सामाजिक इश्यूज हैं, मतलब गर्ल चाइल्ड सेफ्टी के विद इन द फैमिली, emanating from the fact that first cousin marriage is allowed, and probably your first cousin who stays with you 24/7 might see you differently, and then that would increase the safety concern for girl child in the family. एंड देन इकोनॉमिक कॉस्ट जो आती है, ये क्या कहते हैं, हेल्थ कंसर्न्स के कारण इकोनॉमिक कॉस्ट ऑन फैमिलीज एज वेल एज ऑन ओवरऑल सोसाइटी. तो इस पे कुछ अगर विचार रखना चाहते हैं प्रमोद जी, तो प्लीज हम लोग सुनना नमस्ते. चाहेंगे. नमस्ते, जय श्री राम और जय राम जी. सभी को राम राम. मैं तो अभी बस इंटरव्यू हुआ और आपने कह दिया, आदेश कर दिया, लेकिन मैं थोड़ा सुनने दीजिए ना. ठीक है सर, वेन एवर यू आर कन्वीनियंट. तब तक हम लोग वी जी के पास जाते हैं, और समर जी वेन एवर यू आर रेडी फ्लैश कर दीजिएगा माइक. आई यू वांटेड टू से समथिंग? Yes, sir. Let VG speak. He has just come into the room. I'll speak after him. Yeah, maybe since we may also want a bit of perspective, so you can continue and then we'll go to V. Okay, sir. Okay, sir. So I wanted to answer your initial. आपने काफी पहले तरह एक विचार व्यक्त किया था कि how much does this acceptance or actually promotion of consanguinity, first cousin marriage, in certain communities, it may also encourage domestic violence. And that's actually very true, very true. Because see, when you're a girl child growing up in a family safe space, you assume that all your relatives, your mama, chacha, everyone, they're all your friends, and you can be completely frank and open with them. You don't see them as a well, quote unquote sexual marketplace. Don't see them as something that might be thrust upon you later in life. But that's how it happens, right? Your cousins whom you play with as a child are actually, come puberty, they start eyeing you as potential life mate. That's a scary situation. That's a very scary situation where you don't know that your own cousins, and mind you, okay, so it doesn't end there. Socially speaking, in family life, cousins in Pakistan and in these communities, they're actually considered quote unquote safe, कि भाई यहाँ तो शादी हो ही सकती है. Does that make sense? I mean, to people from the south, from our continent, Yeah, subcontinent, है yeah. ना, कि इनसे तो शादी हो ही जाएगी भाई, कोई और नहीं मिला तो इससे शादी कर ही सकते हो. That is how they view it. So that's a very scary situation for a girl, and compounded. See, as I said, Shariat, right? This is this is Shariat, because Muhammad had married his own cousin. Therefore, marrying for any Muslim guy to marry his cousin is Shariat. This is Quran. This is from the Quran. Also from the Quran is halala. Now imagine this.
compound both of them. That not only can your cousin marry you, has a claim upon you by the virtue of Sharia, by the virtue of Sunnat. I'm sorry, I said Shariat, I meant Sunnat. By the virtue of Sunnat, they have a right upon you, and then if they ever divorce you, then the only way back into that marriage in a socially acceptable way is to perhaps even do nikah with their own your own brother-in-law or father-in-law, and that happens. That happens. Many women, and we have seen some brave women who have gone to court in India. They have complained कि my halala was done by my own brother-in-law and my father-in-law. So that kind of victimization can only result when all these situations come together, and that comes together in only one culture, in only one religion. Yeah. So that was a very valid point, sir. I just wanted to extend it. Thank you. And So mental it's trauma is bound to erupt in such cases. so what you're suggesting, I is it just not the girl child safety and security is a concern, but even an adult woman is also constantly under the threat of security concern within the family bound itself. Yes, sir. Hindu में क्या होता है? In Hindus, once a girl marries into your family, she takes your gotra. Then she's out of bounds. आपकी आवाज चली गई शायद. One second. One second. Can you repeat? Some connection glitch. Yeah. No. It was not a connection glitch. Is better now. Yeah. My phone fell down. My phone fell down. So in Hinduism, when a girl marries into a family, she takes the gotra of that family. Now she is out of bound for the entire gotra. The extended family cannot even look at her in any negative way. As opposed to in this particular tradition, as soon as she's not only not out of bounds for her own gotra, because gotra doesn't exist. It is actually good to look upon her. And the moment there is triple talaq, then she's game. She's like a hunted animal in that family, whether it is the brother of her husband, father of her husband, anyone. That makes sense. I hope that's what you were pointing Yeah, at. sounds gross, but it's really a topic. If initially I thought let's not discuss this, but then what you say makes sense. So there are actual cases. I very recently, within the last couple of months, there was a case in UP. Even after triple talaq was made illegal, there was a case where the halala was done by the brother-in-law and the father-in-law, and then even then the husband refused to marry her. He said, "You have to also sleep with my uncle." Then she went to the police. That boss, I cannot take this anymore. This is way too much. Okay, you know. So anybody else would like to contribute? Because this social net of security specifically for the girl child and women in general within a social structure which not only allows but promotes this kind of behavior is a threat to the girl child and even women security within the family framework. I mean, try to understand the kind of pressure a girl child all the way up to women would be undergoing if I don't have words to describe it. I definitely cannot Honestly, step into. Sorry. history, yeah, if you Ha. remember, in 2016 or 17, there was a case. First time there was a case registered of sexual mutilation of the woman in, it was probably Ghana or Congo, some of the African countries, and the Muslim people were asked why they do the mutilation, the sexual mutilation of the girls. Their statement was because so that these girls don't get carried away by the distant relatives of the family. So that is the reason they leads to this mutilation, so that the woman does not get sexually aroused by the men. This was a statement up to 2016 or 17. Ghana or Congo, I just forget the country, but it was.
यस सर, सो मैंने एक I'm केस actually shocked. I don't want to use to express my shock because the room is on, replays are on, but it is Andolan a ji, grave concern. I have Yeah, shared a link to a Times of India article yeah. of one such case, one of the many such cases that I've I'll seen pin that. that made it to Supreme Court. Ki my halala was being done by my father-in-law. I can name n number of cases, sir. मैं आपको हर साल से 10 केस दिखा सकता हूँ. I'm very avid news reader. I'm a news junkie. Even Tulsi Das ji was mentioning to me in the back channel that he knows about a Jammu case where girl was pushed to sleep with his father-in-law or something. Tulsi Das ji, would you like to elaborate on that if you are around? Yeah, I know that that woman was from Chandigarh, but then Yeah. it was a love marriage and they were into relationship for a long time. Then after the marriage, the mother-in-law asked her to sleep with the father-in-law. Of course, they fought and she resisted and she said, we should live separately because this is disgusting. So they shifted to Jammu, the girl in question here and her husband. But then over there also, after some few years of her marriage, her husband started saying, "Why don't you just give in? What's wrong with sleeping with my father?" So he also started pressurizing her for sleeping with her father-in-law. And then, of course, there were a lot of other torture. So she filed a case, and then it was a security risk for her. So she was moving around from one place to another to save herself. And she still is moving around. Ma'am, just to confirm, are we talking about that Yeah, I particular think case that. which was also highlighted on Twitter and Yeah, that Clubhouse girl. by our own fellow mates, right? She was brought here by our own fellow mates, right? Some 2 years back, Okay. there was a program on this CNN itself, CNN IBN, where they said that News 18 actually, where they videographed and broadcasted that some Maulanas they are charging money from people at large and providing the women for halala. That is also the practice What the going on. hell? हाँ ज्ञान सर, Deplorable. वो तो बहुत कॉमन है. It Paying is a sting. paying It the was a sting I think operation actually. Tulsi Dad was willing to. Yes, sir. Please go ahead. Sorry. It was a sting operation, so done by News 18. So that was broadcasted by the this. यस सर, I वो तो suppose बहुत Tulsi कॉमन Dad है. was willing to. यूपी बिहार में अपने लोकल मौलवी मुल्ला को पे करना फॉर हलाला. एंड देन हाँ, इन मेनी अलीगढ़ में तो बोर्ड लगे होते हैं वो क्या कहते हैं 10,000 rupees and get your halala done and 5,000 rupees get your halala done or something like I that. think one of the So sting Sir, it's sort operations of one of the a that reverse, curious has sort of a No, happened. reverse no, prostitution. Andolanji, Not people are paying Maulvis so that a particular lady can come to them in the name of halala. yeah, that's what I was That is mentioning. the Yeah. situation. Uh-huh. आंदोलन जी एक रिक्वेस्ट है. मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ इस केस को जानने में. तो तुलसी व्यास जी को एक बार मौका देते हैं, फिर वापस टॉपिक पे आते हैं, अगर जी आप अलाउ करें. तुलसीदास जी अगर यहाँ पे हैं और वो जम्मू वाले केस के बारे में कुछ अगर डिटेल में बताना चाहते हो तो प्लीज. Yes, whatever Atharvi said, she has actually given all the details regarding that case. But there were other very inhuman brutalities committed upon that particular lady. I will not take her name. But though those arguments will change the course of our discussion, but she was also forced upon by the men of of his husband's family, and even Chilis were about to be forced into her private parts, but she was able to escape. And then after that, she never went home, and till today, the case is actually subjudicial in the Jammu and Kashmir High Court. So that is what it is. Deplorable. No, but whatever we are discussing today, one very good point is, people have not come up to defend this horrible practice of first cousin marriage.
that is a very positive signal. I think society now understands that this is a problem area, but at the same time, when we see 70% of marriages happening is the first cousin marriage in Saudi Arabia and Pakistan, almost 30 to 40% marriages in India within the Islamic community. It sort of are people uh, certainly there is an option to marry outside the first cousin, right? I mean, Islamic society, it is not necessary to marry within first cousin, right? Why would people still want to do that, knowing fully well that it doubles or triples the risk of an unhealthy child? I have this very funny incident, Andolanji, if you allow me to tell. Please, please. Um, this one of my friend, like close. I know how I came to know that they marry within the family, because in UP, from mother side, father side, first cousin, third cousin, fourth cousin, everything is a taboo. Literally, they would ask you even to not marry within, well, like no, marry after you leave 5 villages around your own village area, to make sure that no relative, even from many generation, is not coming into contact. So when I went to Delhi, I had this friend, and she had boyfriend, Muslim boyfriend. So she was complaining that, I'm not sure if this guy is still over his girlfriend. So I said, why wouldn't he sees her every day? So I was like, why would your boyfriend see his ex-girlfriend every single day? That's like not ethical, right? So she told me, oh, because they live in the same house. So and that shocked me, that, why would you live in the same house? And oh, because she's his cousin, that's why they grew up together and they fell in love, and it didn't work out, so broke up. And now my friend was extremely insecure because her ex was living under the same roof as her boyfriend was living. I found it very funny at the same time and very shocking at the same time. That actually exposed me to this, and I started reading about what is this cousin marriage and what do they do, why do they do, and everything. Well, I mean, funny but scary. I mean, both at the same time. समर जी, प्रमोद जी, नित्या जी, गिरीश जी, आप लोगों ने अभी तक नहीं बोला है, तो अगर आप लोग चाहे, एनी ऑफ यू वांट टू Imagine, even if she Andolan ji, got ek, married into that family, she will always have a feeling that, a woman would be so insecure. Like, her mental condition would be so bad that, my husband can fall in love with any woman out there apart from my own daughter, because he allegedly can do that. And would in that, I'm talking from a woman's perspective, if you have an atmosphere like that in your house, would you be able to be a good mother or a good woman? Would your mental condition will be in a good position? Because all the time you will be very competitive to actually be nice to your husband and everything, and you will go to any length, even if it's inhuman, to actually save your family, because you are under constant pressure to keep your husband with you. If you are, if you have this atmosphere that anybody can, my husband is allowed to fall in love with any woman out there, be it cousin, be it aunt, be it bua, chachi, anybody is okay. And it's by law, it's okay. Yeah, Atharvi ji, can you just end your story? What happened to your friend? No, she didn't get I married was to him. also about to ask She that. broke up with him because she was always scared that, I don't know, because she is going to live with in the same family, and they were living in Chandni Chowk, right? So many generations live under the same roof. So she has this thought process at that time, that if I marry this guy, and his ex is also living under the same family, his ex is getting married to another cousin who lives next door, but they will be in contact with each other for whole life. How do I know they will not be having an affair again? So she broke up with him. Yeah, Andolan ji, I wonder if they have Thank you, a ma'am, special for designation for the that. happy ending. Actually, Huh. let me complete, I will. So there is big Thank hodgepodge and you. confusion in relationships. Yes, and Haan, and sir. imagine, Gyanji, that By will the that will way, lead to mental So depression as what well, right?
So Exactly. what will happen to the girl? I mean, what will she call him There's after no definition the of divorce? mother, daughter, sister. There's nothing like that. My mother is Does he also my return to boa. become her brother, or What the hell? No, no. does Why? he I So remain mean, her rightful husband? allow me to bring the discussion back to a Yeah, bit of so seriousness, because this is a Andalucci, genuine concern also. Yeah, yeah, because it's the safety of the girl, child, and woman within the family also, which gets deeply impacted by if you have culture of first cousins, marriages, etc., and all of those things. And we just discussed that. While we might find it amusing, but at the same time, it is a big concern with respect to safety of the girl, child, and woman in the family. So Andolanji, it's not amusing, it's confusing. yeah, but I we know, I are know. just missing one factor out here. True, We are sir. talking only of the Muslims, but even the Christian society has the same thing. It's only the Hindu society does that prevents cousin marriage. All The funny Abrahamic fact, faiths. Actually, on serious yeah, side, I tell नो you one बट thing. एक चीज इसमें ज्ञान सर मैंने जो स्टडी करा, जूडिज्म में अब ये जो जो राबाइज होते हैं, hmm, they are Hmm. not blessing same first cousin marriages anymore. While the हाँ उनमें they are ऐसा है allowed, क्रिश्चियंस में हाँ while they are allowed, and specifically I am talking about Jews, while it is allowed as per scripture certain cousin marriages, but the rabbis clearly say we do not bless this marriage because of the problem in the next generation. So this is the stand taken as a community by Jews, and Christianity, I have my limited knowledge. What is the rate of prevalence, etc. yeah. एक, But एक, So एक यहाँ पे छोटी what सी I बात कहूंगा. what I see, but what I see in the US society, and specifically coming from dramas, etc., first cousin marriages or affairs are not seen very positively in American society either. yeah, it has been Exactly. banned in 24 states of America recently. 24 or 26 states have already banned it, and the See remaining the thing is, also. actually under Hindu, from legal perspective, I am telling. Under Hindu law, we have got a joint family system. We have the right by birth, and under Abrahamic faiths, there is right by death. So there's a legal sanction of joint family in Hindu law among Hindus, and it's almost all over India, leaving aside some parts of Bengal and Assam, especially Bengal. So Mitakshara school, which applies almost all of in whole of India, we have got a joint family system, and joint family means we have to abide by each and every even distant member of the khandan or family. But in Abrahamic faiths, there is right by death, meaning thereby that there is no value of relationship and there is no concept of joint family there. Till the father is alive, the son or the daughter, they don't have any right in the property, and therefore the joint family system does not emerge there. And since the joint family system is not there, therefore they don't have any value for the relationships. They don't have value for the family. That is the reason. हमारे एक प्रोफेसर थे जो हमें मुस्लिम लॉ पढ़ाते थे, तो वो जहीर साहब नाम था उनका. वो कहते थे कि मुसलमान है, एक ईंट का मकान बना लेगा. मीनिंग that he individually can live in the world. There is nothing, no concept of family actually. That is the thing. Like I can give one example. The commonality among Queen Elizabeth, Albert Einstein, and Charles Darwin was they all married the first cousin. They all married the first cousin. Then there was, if you True, go true. to, then there is another fact. Probably I am forgetting. Either it was Leo Tolstoy or William Wordsworth who also married their first cousin. So there are many examples. Actually, there is Yeah, I background in think the Leo theology Tolstoy. itself. In Abrahamic faiths, there is a theology behind it. The theology is that they don't believe women having soul in them. Women for Abrahamic faith is a non-living thing for entertainment only. Therefore, the concept of a family or joint family doesn't develop there. That is the problem. Plato and Socrates, if you go through the philosophies of these Plato and Socrates, they specifically said
that women are for entertainment. These are non-living things, just like table, chair, and everything. That is the problem. Socrates, when Oh, being did Plato and Socrates said that? I mean, Yes, yes, great no, thinkers. yeah, Socrates' statement was when Socrates was being asked that do you think the women have less intelligence? Socrates promptly said because they have less number of teeth, and Hmm. that was being And followed by every philosopher. Plato said that there should be communism of wives. Means it should not be specified that the particular lady is wife of that particular man. The wife should be held in common for the society, and the as in child commune, shouldn't huh? know. Yes, this is concept of communism of wife by Plato. Wow. Great thinker. Too much great to digest. By God, I never knew this side of Plato. But we have a couple of new speakers. Nitya ji, I haven't. I think we haven't given an opportunity to speak. If you would like to speak, else we go to Nitya ji, Joravar, and Anshul ji. I think V is not around, so Yeah, can I I'll speak now? move we back to audience. You can raise hand once you want to come in. Zoravar, yeah, go ahead, Zoravar. There was a very famous Russian writer, I don't remember his name, he has written a very famous book on degenerates. So ये जितनी स्टोरीज अभी हम बात कर रहे हैं ये degenerates के ऊपर नहीं है और हमने अपने पर्सनल लाइफ में भी अपने दोस्तों के बीच में देखा है कि आपस में शादी ब्याह करने से क्या होता है हमने बच्चों थोड़ा को सा देखा आवाज जो तेज जमीन कर में दिए रेंगते जोरावर जी। हाँ, थोड़ा मैं क्लोज बोल आ रहा हूँ कि जाइए आवाज। हमने अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखा है हमारे मुसलमान कई भाई दोस्त लोग हैं जिनके आपस में शादी ब्याह की वजह से जो बच्चे हुए हैं वो जमीन पे रेंगते हुए देखा है मैंने और अपना एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है जो जिसकी बेटी ने उसके बड़े भाई की बेटी से शादी की ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है इनमें इनको पता भी है लेकिन इनमें तो एक सुरूर है ना तो अफीम खा के चलते यही है बस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड जय श्री राम अच्छा, मैं ये चीज समझना चाहूंगा। uh, as I was saying earlier, that in Islamic society, while it is allowed to marry your first cousin or chachi, mami, etc., but is it given a preferential treatment? That is why that is such high amount of prevalence, or is it just a matter of convenience? Why is that such high numbers are coming in, specifically? I Practically, mean, yes. Practically, yes. First, they look towards the cousins, and then only. And the thing there is that it's the generally in Indian Muslim society, it's the boy side who approaches the girl हाँ, side for the marriage. अच्छा इसमें, हाँ ज्ञान So सर, मैं आपको बताऊं, जैसे मेरे एक मित्र हैं, वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, बड़े अच्छे पुराने मित्र हैं बचपन के। तो वो हमें एक बार ऐसे ही बता रहे थे कि मतलब ही इज फ्रॉम द फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, राइट? तो दे मेड अप अ पॉइंट दैट दे विल नॉट मैरी विद इन द फर्स्ट 3-4 कजन्स, राइट? और वो मुझे एक बार बता रहा था, ये डिसीजन लेने के कारण उनके घर में कितनी लड़ाई हुई है, इन द सेंस कि जैसे उनके बुआ ने कहा कि ये तो तुम तो मेरी लड़की से ही शादी करना, एंड दे रिफ्यूज दैट दिस इज नॉट पॉसिबल, एंड people actually, mamas and buas, felt offended that these guys are not marrying into our family, they see us as lower people or something like that. So they faced a lot of challenge in their society. लोगों ने रिश्ते तोड़ दिए उनसे इसलिए। हमारे टॉट्स पढ़ाते थे, नजीर साहब थे हमें, तो वो इसी व्यू के थे कि भाई ये कजिन मैरिज नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने टॉट्स के उसमें क्लास में ये बात कह दी, तो वहां पे स्टूडेंट्स और जो मौलाना टाइप के स्टूडेंट्स थे वो खफा हो गए उनसे बुरी तरह से, कि आप इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं। ही वाज लंदन अटेंड। तो बोले भाई मैंने तो अपना व्यू बोला है। बोले आपने कुछ भी बोला हो, इस्लाम के खिलाफ नहीं जा सकते आप। अंशुल जी, हाँ सर। और हाँ हाँ, just one आंदोलन जी second. बस There are a एक और couple of people we have पॉइंट ऑफ not taken any इन्फॉर्मेशन views. हाँ, okay. पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान में जो सोप ऑपरेज होते हैं ना वहाँ के जो सास बहू सीरियल उसमें भी कजिन मैरिज को ग्लोरीफाई किया जाता है। तो मैंने जितने भी पॉपुलर रिबटल देखे हैं उस सब में बोला गया है कि भाई पाकिस्तानी सीरियल्स आप ये सब दिखाना बंद कर दो। तो पाकिस्तान में बहुत ये पॉपुलराइज किया जाता है कि कजिन मैरिज इज गुड।
उनके मैस मीडिया में। ओके, अंशुल जी, पिनाक जी, Amit ji, Anshul ji, would you like to say something? I think we missed Nitya ji also. No, Nitya ji also. अंशुल जी, you're not audible somehow. मेरे ख्याल से एक बार आप एग्जिट करके एंट्री लो, कुछ ग्लिच है। आपका माइक खुला हुआ है पर आवाज नहीं आ रही। अच्छा, हर हर महादेव। सर मेरा एक हाँ जी, अमित जी। जी, हर हर महादेव, सभी को राधे राधे। तो कमिंग टू जी, अब मेरी आवाज ठीक है ना? मैं ट्रेवल भी कर रहा हूँ साथ में। सर आपकी आवाज बहुत शानदार है, हम तो पहले भी तारीफ कर चुके हैं। ओके, तो फर्स्ट कजन मैरिज डिफॉर्म योर नेक्स्ट जनरेशन। जितना पहले एक एक मैरिज तो खैर अपने आप में चैलेंज होता है, इसको चैलेंज भी है और बहुत कुछ है, बट इनका हम रेफरेंस के तौर पे मैं अपनी बात करूं या सनातन की बात कहूं तो हमारे यहाँ इसके पीछे साइंस भी नहीं करना है। जो गोत्र वगैरह का जो सिस्टम है, इवन जैसे हम मेरी खुद की शादी हुई थी तो हमारे समाज में बेसिकली देखा जाता है कि 7 पीढ़ी तक कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ बताया था। तो एक वो है। अब इनके यहाँ ऐसा क्यों है, इसका कुछ मुझे स्पेसिफिक रीजन तो पता नहीं कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, बट ये एज ए सनातनी हम बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रिश्तों की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इवन अभी भले ही मॉडर्न एज में रिलेशनशिप में कोई चैलेंज मिल रहे हैं, इवन मैरिज सिस्टम को भी चैलेंज मिल रहे हैं और इंडिविजुअल लोग रहना पसंद करते हैं, न्यूक्लियर पसंद करते हैं, उसके बाद भी जो रिश्तों की अहमियत है हमारे यहाँ हमेशा थी है और आगे भी रहेगी। अब जहाँ तक रही बात फर्स्ट कजन मैरिज की, तो एक जो चीज़ इनके यहाँ पे ऐसा है जो मैंने सुना था सोशल मीडिया में ही कि एक ही वोम से नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ है, इसलिए इनका आपस में इस तरह का चलता है। बट ये अगर इसको हेल्थ वाइज जैसा मेडिकल साइंस कहता है कि ये हेल्थी नहीं होता। एक अमित भाई, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक वंश से भी इनमें होता है, तभी ये गालियां भारत में आई हैं। ये माँ से रिलेटेड गाली और बहन से रिलेटेड गाली, ये कोई हमारा सनातनी नहीं है, मलेच्छों से लाया हुआ चीज है। इनके अपने संबंध है, जो गाली है यहाँ पर, जो माँ की गाली देते हैं या जो बहन की गाली देते हैं। जी जी जी, अमित जी का पॉइंट पूरा सुन लेगा। जी जी जी, अब जी जी बिल्कुल सही कर रहे हैं अपने जो बड़ा, उसी में एक लाइन और भी ऐड कर देता हूँ। जैसे गालियों की बात होती है तो मेरा मानना भी है कि जहाँ तर्क खत्म हो जाते हैं वहां से गालियां शुरू होती है। तो जाहिर सी बात है, आजकल वैसे भी अभी इस्लाम पे हम काफी चर्चा कर ही रहे हैं। 1-2 पॉइंट और भी मैं जस्ट ऐड कर रहा हूँ रेफरेंस के लिए, कभी और आगे डिस्कस कर सकते हैं कि इनकी जो होली बुक है, विद रिस्पेक्ट मैं कहना चाहूँगा कि उसमें ये कहते हैं कि उसमें साइंस भी है, एम्ब्रोलॉजी भी है, धरती गोल है, चपटी है, समथिंग ये भी कहते हैं। तो उसमें ऐसा क्या है जो पहले से नहीं पता था? क्योंकि अगर उसको हम अपने यहाँ के तुलसित करें तो हमारे तो सुश्रुत और वेद पुराण में वो सारी चीज़ें बहुत पहले से एग्जिस्ट करती है। तो एक वो भी है। अब कमिंग टू द टॉपिक की जो चूंकि ये कज़न मैरिज वाला है, ये बहुत ही अच्छा। एक चीज़ और भी है कि जैसे अब ये 25 करोड़ हैं पूरे देश में फैले हुए हैं, तो इवन जब मैं जनरली, जैसे मेरे ऑफिस में कम से कम 4-5 मुस्लिम हैं, लेकिन हम लोग कभी रिलीजन पे चर्चा करते ही नहीं है। बट आई थिंक उसमें से 3 तो फीमेल हैं और हमारा रेगुलर इंटरेक्शन कम्युनिकेशन होता है, तो शायद फीमेल्स भी इस चीज़ को लेकर शायद वो भी अनकंफर्टेबल फील करती होंगी कि इस तरह की चीज़ें उनके मजहब पे है और उनसे उनको गो थ्रू होना पड़ता है। तो दिस इज़ अ वेरी, अब वो बचपन से खैर जो चीज़ बता दी जाती है तो या तो वो कंफर्ट जोन में चली जाती होंगी, बट जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखा तबका जरूर इन बातों से अनकंफर्टेबल फील करता होगा। और बार बार वही है कि रिफॉर्म की ज़रूरत है, बट रिफॉर्म अंदर से ही आएगा और ये इस्लाम तो बंद कोठरी की तरह से है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, गोल गोल करके हम वही पहुंच जाते हैं। जी, अभी के लिए यही है। और समर जी नमस्कार। फीमेल जनरली अनकंफर्टेबल महसूस करती नहीं है उनमें, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वी सनातनीज बिलोंग टू ए डॉगमेटिक सोसाइटी और ये हर चीज में कुछ ना कुछ बात निकाल लेते हैं, तो हमारे यहाँ तो जो चलता है दैट इज बेस्ट।
because they are also comfortable in some things. Once you keep a lady in burqa and hijab throughout his life, then she also have some desires and she has to fulfill it in one way or the other. So तो therefore the चलिए things वो appear. हाँ हाँ ये उतना साइंटिफिक नहीं है पर तब भी ठीक है एज आर आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं अंशुल जी यू नो इफ यू वांट टू यू नो पोस्ट योर कमेंट फॉलोड बाय पिनाक जी नहीं सर, थैंक यू सो मच। मैं अभी सुनना चाहूंगा, थोड़ा काम भी कर रहा हूँ साथ साथ में, तो मैं डिस्कशन सुन रहा हूँ, काफी अच्छा लग रहा है। मुझे बस ये जानना था कि ये कजन मैरिज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या, कोई कोई बता सकता है? बस मैं ये सुनना अभी तक तो चाहूंगा। डिसएडवांटेज ही सुनने में आए हैं, एडवांटेज तो कोई बताने नहीं आया है अभी तक ओके, तो हाँ अनुज जी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा और आगे जाके पर्शियन कम्युनिटी में अगर देखते हैं, देयर दे मैरी देयर ओन सिस्टर, ओके मींस देयर बट लेट मी देयर बिफोर देयर यू ब्रदर। स्टार्ट निसमनन जी वी साहब आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? जी सर, पहले तो माफी चाहूंगा, अंदर में कुछ काम कर रहा था जब आप पूछ रहे थे, तो जब अच्छा तक मैं अच्छा 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 ठीक है, फोन नो तक वरीज। पहुंचा मुझे पहले ही आप ऑडियंस में डाल अच्छा दिया। नहीं होता क्या है ना वी तो साहब, एक्चुअली मैं शायद हमारा आपका परिचय है पर वैसे नहीं है, मैं वी के नाम से नहीं हाँ पहचाना, जी, तो मुझे हाँ लगा जी, कई बार कई लोग आके बैठ जाते हैं रूम को ब्लॉक करने के लिए लोगों से, तो मैं इसलिए जो लोग कंट्रीब्यूट नहीं करते उनको नीचे कर देता हूँ थोड़ी देर के नहीं लिए, कोई पर कोई बात प्लीज गो हेड हाँ। बिल्कुल बिल्कुल आपकी सही बात है। तो पहले तो किसी ने पूछा था कि उनको बायोलॉजिकल डिफेक्ट के बारे में इतना नहीं पता था। मैं बता देता हूँ कि जब हम बायोलॉजी देखते हैं, और आपने बोला था कि हमारे सनातन धर्म में 7 पीढ़ियों तक अपने रिश्ते में शादी नहीं की जाती है। तो इसमें प्रकाश डालूंगा कि 7 पीढ़ी क्या, हम अपने पूरे गोत्र में कहीं शादी नहीं कर सकते, क्योंकि अपना पूरा गोत्र एक खानदान बन जाता है कि हम एक ही वंशज से पैदा हुए हैं जो हमारा गोत्र है। तो हम सब जो गोत्र होता है उसको हम अपने भाई बहन की तरह नहीं मानते। तो हम अपने पूरे गोत्र में कहीं मैरिज नहीं कर सकते, चाहे वो 7 पीढ़ी हो या 700 पीढ़ी हो। और उसका कारण ये है क्योंकि जो जेनेटिक म्यूटेशन होता है, तो होता ये है कि अगर आपके खानदान में कोई जेनेटिक बीमारी चली आ रही है जो कि एक जीन से दूसरे जीन में, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रचालित हो सकती है, तो बहुत ज्यादा खतरा होता है कि आपकी आने वाली पीढ़ी में वो बीमारी कभी खत्म नहीं होगी और आपका जीन जो है वो म्यूटेट नहीं हो पाएगा उस बीमारी से। तो अगर वो बीमारी चली आ रही है तो वो चलती रहेगी, जिससे कि एक टाइम ऐसा भी आता है कि अगर वो बीमारी इतनी बढ़ जाती है तो हो सकता है कि आगे चल के कोई बचे ही ना। और ये तभी होता है जब एक बार एक रिसर्च हुई थी कि क्या दो लोग अगर धरती पूरी खत्म हो जाए तो क्या दो लोग दोबारा से धरती बना सकते हैं, कि अगर एक एक लड़का एक लड़की अगर रह गए तो क्या दो लोग दोबारा धरती बना सकते हैं, दोबारा इसे पॉपुलेट कर सकते हैं। तो यही निकला था कि ऐसा करना बहुत असंभव है, मुश्किल के असंभव है। तो और फर्स्ट का दिन तो बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। आप तो और एडम और ईव के पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्ट्रॉय करते रहिए कह के। वही सर वही एडम और ईव, सर एडम और ईव का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कौन बोलता है एडम ईव का कॉन्सेप्ट? आप मुझे बताइए, आप मानते हैं नहीं एडम नहीं और मतलब हम एक बात ईव? बता रहे हैं, लोग मानते हैं ना उसमें इसलिए। तो मानने वाले तो बहुत कुछ मानते हैं। मानने वाले तो यही मानते हैं कि सनातन इस्लाम का है। मानने वालों को कुछ भी थोड़ी बंद कर सकता है। ऐसा है, आपको पता नहीं है, जो एप्पल का न्यूटन ने कंसेप्ट लिया था वो एडम ईव से लिया था, समझ गए? और जहाँ तक कि गर्ल सेफ्टी की बात करते हैं तो अ, हाँ, हम ये मानते हैं कि जब हम रिश्तों में आते हैं और जब हम अपनी भाई भाई बंधु बहनों को देखते हैं तो उन्हें लगना चाहिए कि वो हमारे साथ जो है सेफ है एक्चुअली। और जब उन्हें पहले से ही उनकी नजरों में ये होता है कि मेरे साथ तो कुछ भी हो सकता है, कि अगर मैं इस बंदे के साथ रहूंगी तो कुछ भी हो सकता है। इवन अगर मेरी शादी हो जाती है और मैं अपनी बहन के साथ ही बैठा हूँ तो मेरी जो जो पत्नी है या जिसके साथ मैरिज है, उसे कहीं ना कहीं ये डर हमेशा रहता है कि इनमें कुछ भी हो सकता है, इनमें संबंध बढ़ाया जा सकता है और मेरा धर्म इसे बिल्कुल भी खंडित नहीं करेगा और वो इसे और बढ़ावा देगा। तो एक वहां पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जो फील ऑफ इनसिक्योरिटी होता है वो सिर्फ एक तरफ से नहीं, वो दोनों तरफ से होता है। कि अगर आप बाहर भी शादी कर रहे हैं ना तो एक छोटी सी इनसिक्योरिटी तो भी रही जाती है। और तो अभी तक तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो फर्स्ट मैरिज का कॉन्सेप्ट है वो सर बिल्कुल एब्सर्ड है। इसके सिर्फ बायोलॉजिकली नहीं, मेंटल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं और फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस तो हैं ही।
जी। पिनाक जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस विषय पे? राम राम सभी को। सर, ऑल आई हैव टू से इज, सी, ज्ञान सर हैज मेड वेरी वैलिड पॉइंट्स। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट्स आर एक्चुअली कोडिफाइड जस्ट लाइक द पारसी एंड द क्रिश्चियन वंस। सो हमारे उसमें इतना तकलीफ नहीं है। एंड द बिगेस्ट एग्जांपल जो लोग यहाँ एग्जांपल मांग रहे थे कुछ देर पहले, भाई, यू लुक एट द पाकिस्तानी कम्युनिटी लिविंग इन लंडन, फॉरगेट द अदर cities, just living in London. More than 50% of the current generation is suffering from some kind of disease that is mental. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। Like, they are having Down syndrome, Asperger's syndrome, all पूरे स्पेक्ट्रम में जो भी हैं, ADHD तो मेरे को भी यानी है, dyslexia तो ये even 50% पिनाक जी? I'm not joking, उनकी करंट जनरेशन से जो उनके स्कूल में अभी, they are like, क्या बोलेंगे, उनको बोलते हैं ना, हिल बिलीज के बच्चे जैसे होते हैं अपना सदर्न स्टेट्स में विद इन यूएस, जो अपने कजिन शादी कर लेते हैं, उनका भी इतना वो नहीं है। लाइक द पाकिस्तानी कम्युनिटी इन यूके इज दैट व्हाई दे आर स्ट्रगलिंग, नो, लाइक उनको यानी जो उनकी अभी अपकमिंग जनरेशन है, मोस्ट ऑफ देम आर लाइक अनेबल टू, जैसे भाई साहब बोल रहे थे कि दे हैव यानी रैंक यानी वो चलते हैं, these people are having spinal what you can say deformities, they are having limbs में deformities, हाथ पैर टेढ़े हैं, ऐसा सब कुछ है, तो कैसे होगा देन? एंड दे से कि हम तो यानी क्या बोलेंगे उसको, तो क्या वो हम हमारा वाला जीतेगा और हम पूरा फतह करके रहेंगे। अरे तुम अगर अपने फौजी ठीक से खड़े नहीं कर पा रहे तो क्या जीतोगे तुम हमसे? कुछ भी। एनीवेज, बट So ऑनेस्टली what स्पीकिंग what सर, you are suggesting, Pinak ji, it has physical impact यस as well. यस सर, यस बिकॉज यस, इट हैज आपका फिजिकल सिस्टोसिस वगैरह, फाइब्रिक सिस्टोसिस वगैरह, स्पाइना बिफाइड, आई डोंट इवन नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट, देयर आर मेनी डिजीज व्हिच एक्चुअली विल शो ऑन Fibrosis, फिजिकल डिफॉर्मिटी। fibrosis is the major disease ये that भी we ये भी is रहता causing है कि fibrosis. accumulation होता है ना ओवर जनरेशन, सो अगर कई जीन जनरेशन ने जंप। ऐसे शादियां की तो इट विल अपीयर इन वन जनरेशन हाँ, वेरी नहीं, इजीली। अगर eye फर्स्ट disease जनरेशन as में well नहीं as दिखाई दिया तो hearing issues जीन जंप, and speech impediments. yeah, speech impairment, deaf, this thing, there is cardiac problems, children born with a hole in their heart, I don't know what the word is, that, and then there's a gene jump, it's not the first generation, it may not be so evident, but the generations that come after it, and if there is constant incest, so wo zyada, they are more prone to even diseases like learning disability, ADHD, इसके epilepsy, बहुत सारे conditions होते हैं where it is due to genetics. और फिजिकल डिफॉर्मिटी भी है। आई टोल्ड यू नो, आई सीन किड एक्चुअली लिटरली यू नो क्या बोलते हैं, मेढक के जैसे चलना है सर। फिजिकल डिफॉर्मिटी भी है बहुत ज्यादा, यही तो डिजेनरेट्स हैं ये तो। सर एक्चुअली ना सिर्फ जेनेटिक तौर पे ही बीमारी नहीं होती है। एक्चुअली जब आप फर्स्ट कजिन मैरिज में आपको तीन तरह से हो सकती है, या तो कॉन्जिनेंटल डिसीज होती है। कॉन्जिनेंटल डिसीज लाइक कि आपके हार्ट में और आपके लंग्स में डिफेक्ट हो, या लेफ्ट पैलेट्स का एक एक्स्ट्रा थॉट आता है यहाँ। दूसरी होती है सर बर्थ डिफॉर्मिटीज, एक्चुअली बर्थ डिफेक्ट जिन्हें हम बोलते हैं। तो वो वहाँ पे होता है कि बर्थ डिसीजेज में होता है कि आप जब पैदा होते साथ ही आपको जो डिसीज होती है ना, जो आपने सुना होगा कि जन्मजात बीमारियां जो होती हैं, तो वो बर्थ डिसीज में आती है। और तीसरी होती है सर जेनेटिक डिसीज। जेनेटिक डिसीजेज में होता है कि अगर आपके पेरेंट या आपको कोई डिसीज है। एक्चुअली बर्थ डिसीज और जेनेटिक डिसीज में अंतर होता है कि बर्थ डिसीज मे और मे नॉट भी जेनेटिक हो सकती है, बट तीसरा जो जेनेटिक डिसीज आती है वो मोस्ट प्रिवेलिंग डिसीज है अगर आप फर्स्ट कजिन मैरिज करते हैं, क्योंकि एक बहुत एक बहुत बड़ा रोल होता है जीन का, जीन और जीन जंप का। जैसे कि आपने बताया कि मे बी आपकी फर्स्ट जो जनरेशन है वो थोड़ी ठीक ठाक निकल जाए, मगर आप जब कंटिन्यूसली ये करते रहेंगे तो जो जीन म्यूटेशन होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक और घातक हो सकता है। तो अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है वी साहब, जी डज सर। दीज जेनेटिक, एक तो आप लोगों ने फिजिकल और डाउन सिंड्रोम इन सब की बात करी, जी is सर। there any correlation of this kind of genetic disorder leading into aggression, crime rates, depression in सर, in these kind of kids? यू आर राइट, जी Has जी that बिकॉज सर। kind, yeah. जी सर। दैट जी इज सर। I एक्चुअली believe so. I अ believe it सिम्टम ना। that कैन एक सेकंड, कैन आई कैन हैंडल कैन दिस। ओके। दैट इज सर, देखो अभी जैसे हम बोलते हैं कि कोई मिसफिट बोलते हैं ना हम, सोशल मिसफिट, वो कौन होता है? जिसे ये लगता है कि भाई मेरे इंटेलिजेंस को वैल्यू नहीं किया जा रहा। अरे भाई, आपका आईक्यू ही 55-60 का है
और आप एक्सपेक्ट करते हो कि हम 90 टू 110 के रेंज वाले आपसे आप अपने क्या बोलेंगे उससे ट्रीट करेंगे। मेंटल थोड़ी ना है हम लोग, ठीक है, प्रॉब्लम हमें नहीं है। And then these people, in order to prove themselves, or order to, I would say, for lack of better words, try to get into someone else's pants, they start doing all these things, and दिमाग पैदल होता है, and they feel कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और किसी एंड वंस इन 1000 generations जो है एक आदमी को सपना पड़ता है कि मेरे को तो खुदा ने बोला है और मैं खुदा का बंदा हूँ, एंड द रिलीजन स्टार्ट हो जाता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट सर्कल। नहीं, वो जो एक्चुअली सपना सर पड़ा होता था, क्या है कि वो सपना पड़ा था, वो भी एक डिजीज ही था मेरे ख्याल से, कि एक वो ऑरा उसको दिखाई देता था। तो वो सपने शायद नहीं थे, और इट वाज मोस्टली मेड अप। एनीवे, लेट अस नॉट कमेंट ऑन दैट। पर ये जो अग्रेशन का पार्ट है, आई थिंक इट इज ऑल्सो ड्यू टू द स्टिमुलाई दैट इज गिवन टू देम। आप नहीं देखते कि दूसरे कम्युनिटीज में जहाँ इंसेस्ट होते हैं इतने वायलेंट, देयर मे बी टेंडेंसीज ऑफ वायलेंस, बट इतने वायलेंट और इतने अग्रेसिव नहीं होते दूसरे कम्युनिटीज में। सो देर इज अदर स्टिमुलाई विच इज गिवन टू देम, विच इज fed to them, and they're made to believe certain things which they believe, which also leads to that kind of aggression, और जो एकदम भूत सवार रहता है उनको, और जो इट्स पागलपन उन कंट्रीब्यूशन लोगों ऑफ में नजर मल्टीपल आता है। फैक्टर दिखती थी, बट अगर Yeah, मान या filter लीजिए इमेजिन syndrome के and Down आपके एक्चुअली पास syndrome. पर इट इज मैं नॉट ओनली एक जेनेटिक। मैं एक जो छोटे से एग्जांपल से बताना अगर आपको चाहूंगा। हाँ हाँ, वन डिप्रेशन वन है, वन माइक एट अ टाइम। मान लीजिए आप जेनेटिक डिसऑर्डर से आप ग्रसित हैं, और मतलब जो फिजिकल डिफॉर्मिटी अगर वो डिस्प्ले नहीं भी हो रही है, तो मेंटल डिप्रेशन ये तो है कि 3 times मोर मेंटल डिप्रेशन होता है जो बच्चे कजिन मैरिज, ये तो साइंटिफिकली अच्छा, स्टैब्लिश्ड है, इज राइट? देयर एनी और लोगों ने रिसर्च बैकिंग तो दिस अप, अदरवी जी? हाँ, डिस्प्ले नहीं, मेंटल डिसऑर्डर को स्टैब्लिश किया गया है आंदोलन जी के इट इज वन ऑफ द पीपल हु आर इनटू कजिन मैरिज, दे आर लाइक टू सफर मेंटल डिप्रेशन मोर देन द पीपल हु आर नॉट आउट ऑफ द कजिन मैरिजेस। तो अगर आपके पास मेंटल डिप्रेशन है और इस केस में आपको कोई नो तुरंत तुरंत नया आइडिया फेन करता है, या फिर ब्रेन वॉशिंग करना बहुत इजी हो जाएगा उस केस में, वेयर यू आर ट्राइंग टू फाइंड योर ओन आइडेंटिटी एंड एवरीथिंग। mental depression has got nothing to do with this social इंजीनियरिंग, और जो सोशल ये होता है वो अलग है। मेंटल डिप्रेशन But I guess इज अ in when वेरी you are वेरी, depressed, इट्स Priti, you don't really no, raise a lot of questions, right? being depressed and having mental depression are two different things. Mental depression is a medical condition. Feeling depressed हम सब लोग फील करते हैं, कुछ लोग ज्यादा फील करते हैं, कुछ लोग कम फील करते हैं। उसका और इसका I personally don't feel there is got a much this thing, but if yes, the stimuli that is given, जो मैं बोल रही हूँ ना, आपको ट्रीटमेंट देना पड़ता है, और आपके एनवायरनमेंट, मतलब आपके इर्द गिर्द कैसे लोग हैं और आपको कैसा सपोर्ट मिलता है और आप उससे कैसे उभरते हो, वो बहुत बड़ी फैक्टर है। तो हम ये नहीं देखते कि दूसरे कम्युनिटीज में ये ज्यादा होता है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ इंसेस्ट, कि जिस कम्युनिटीज में इंसेस्ट होता है ऐसा नहीं हम देखते हैं कि जो वो लोग वायलेंट हो जाते हैं। सो वायलेंस इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ मेंटल डिप्रेशन, बट येस इट इज अ स्टिमुलाई दैट इज गिवन, और ये कांस्टेंट है। देखिए उनके, अब जैसे आपने ही एग्जाम्पल दिया कि आपकी जो फ्रेंड थी उसने दो भाइयों से, आई डेंट फॉलो इट प्रॉपर्ली, बट आई गॉट द जिस्ट दैट शी इज गोइंग टू लिव इन द सेम अंडर द सेम रूफ। तो what kind of a family environment is going to be there where the children that are coming into this world do not are not given a proper definition of relationships? जैसे कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे चाचा है, ये मेरे मामा है, वही पता नहीं है, तो आपको तो कंफ्यूजन होगा ही। और एंड जो इनसिक्योरिटी आपने कहा मदर में है, that will obviously translate into the children, and the children are not going to feel very secure when your parents and your mother, Yes, the yeah. primary caregiver, is not that secure. So all these things do have an impact. So it is not only mental depression. Multiple Let us not factors हो सकते हैं ना Yeah, इन yeah. बैठ yeah, के। So Deepti ji, what I it is think, definitely It's not, multiple what I nothing factors. is think, Yeah, binary what I when it think comes to Atharvi ji is social trying to say. behavior. but yeah, Okay, yeah. so let me so there were a couple of more आंदोलन people who जी wanted आप, to speak. हाँ, we आप कुछ कहना हाँ चाहते थे? जी 30 seconds हाँ में जी बोल आप, दीजिए, फिर पुनीत जी के पास और सिम के पास चलते Andolan हैं। ji, I just जी want जी to tie up the आपने मुझसे, points. I just want to tie up the points that Atharvi ji and Deepti ji said. Yeah. They made very good points. I just want to tie them up very shortly. So what Atharvi ji was saying was about the biological outcomes of inbreeding incest, and what uh, I'm sorry, Deepti ji was saying was about the stimuli that are given in a particular community.
So I think both of these factors combined together leading to a larger problem, right? So एक exponential combined effect होता है, biological plus psychological of the inputs from the surrounding. तो आप कह रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरह का ज्योमेट्रिक Geometric, प्रोग्रेशन हो जाता geometric. है। हाँ. हाँ, So in नहीं short, नहीं the मेरे infiltrate मेरी syndrome and Down to make syndrome. this point, just 1 second please. क्योंकि साउथ में कुछ कम्युनिटीज में फर्स्ट कजिन मैरिजेस होते हैं. फर्स्ट कजिन इज नॉट इन द सेम फैमिली, सेम गोत्र के नहीं, लेकिन मामा के लड़के से वैसे दूसरे गोत्र के, बट दे आर फर्स्ट कजिन्स. सो वहां पे ऐसी प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली इतने ज्यादा नंबर्स में नहीं है वो, और वहां पे ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई पड़े हैं. सो आई डोंट थिंक इट इज ओनली नहीं इट मे दीप्ति बी. जी, जी जी यहाँ जी पे थोड़ा प्लीज सा गो. इंटरवेंट करूंगा मैं. आपने जो बताया साउथ में कुछ कम्युनिटीज हैं, वो बेसिकली एक रिलेशन में होता है, वो मामा और भांजी का रिलेशन जिसे हम कहते हैं. जी जी सर. और वो बहुत एक दो सब कास्ट कह लीजिएगा या कम्युनिटीज हैं जहाँ पे वो अ, उस तरह से करते हैं. लेकिन आपको इसमें एक चीज और मैं बता दूं कि जैसे मैंने अब शुरू में कहा था कि हिंदू लॉ में जो है, हिंदू की डेफिनेशन नेगेशन में दी हुई है. अ पर्सन हु इज नॉट मुस्लिम, पारसी, ज्यू और क्रिश्चियन इज ए हिंदू. तो हिंदुस्तान में क्या है कि बहुत सारी कम्युनिटीज उसमें ऐसी गवर्न हो रही हैं हिंदू लॉ में, जिनको हम हिंदू कह रहे हैं, जिनकी कल्चर जो है मुस्लिम से मिलती जुलती है. जैसे किसी जमाने में, आज से करीब 30-40 साल पहले, गुजरात की एक खोजा ट्राइब होती है और एक और ट्राइब होती है, मेरे दिमाग से नाम उतर रहा है उसका. तो वो हिंदू लॉ से गवर्न होती थी, लेकिन उनकी जो कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो क्या कहते हैं, इनसे मुस्लिम से मिलती थी. तो लेटर ऑन दे बिगिन टू बी गवर्न बाय मुस्लिम लॉ. तो ये जो यहाँ पे 800 साल का संघर्ष रहा मुसलमानों के साथ में, तो बहुत सी कम्युनिटीज, बहुत सी ट्राइब्स इस तरह की हो गई कि उनका ना हिंदू का पता है ना मुसलमान का पता है, लेकिन बाय द मैंडेट ऑफ लॉ दे आर बिलीव टू बी हिंदूज. तो ये चक्कर है उसमें. थैंक यू. अदरवाइज हिंदू लॉ में जो है, मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हिंदू लॉ में खासतौर से प्रोहिबिटेड डिग्रीज और सपेंडा रिलेशन का जो बैरियर है, वो मिताक्षरा स्कूल से लिया गया है. और मिताक्षरा स्कूल जो है, वो याज्ञवल्क्य स्मृति पे बेस्ड है. तो याज्ञवल्क्य स्मृति में जो कहा गया है, उसके बेसिस पे हिंदू लॉ यहाँ की अधिकतर बनाई गई है. तो जो है, अब थोड़ा अमेंडमेंट्स को अगर एक साइड में रख दें, तो हिंदू लॉ तो जो कह रही है उसमें प्रोहिबिटेड डिग्री, सपेंडा रिलेशन, ये सारी चीजें हैं. लेकिन क्योंकि हिंदू की डेफिनेशन नेगेशन में दे रखी है, इसलिए देयर आर सर्टेन कम्युनिटीज which are exceptions to this mandate of law. Thank you. So Gyanji, what you're basically saying is that certain Hindu communities do not follow the Yajnavalkya law. No, no, no. That's what you're There saying. are two schools of law under there are two schools of Hindu law. One is Mitakshara school and another is Dayabhag school. So this Dayabhag school is followed in some parts of Bengal and Assam. Otherwise, in whole of the country, Mitakshara school is followed. So Mitakshara school, that is based on Yagyavalkya Smriti. There are some 20 Smritis among Hindus. So one of them is Yagyavalkya Smriti. Yagyavalk was a rishi. So he has mentioned that how a family should be, what family law should be should govern the Hindu family. But the problem is not problem, but the law of the land is that definition of Hindu has been given in negation, which is a good thing. And the negation is a person who is not Muslim, Jew, Parsi or Christian is a Hindu. So what has happened that for last 1,000 years, since we have been ruled, or we have been doing agitation against these Mughals and all these Muslim invaders, so there are certain communities which by practice are Muslim, but they are still governed by Hindu law. That is the practical position. I cited a Khoja community of Gujarat. Earlier, they were governed by Hindu law, and later on, they began to be governed by Muslim law. So, when it comes to these kind of communities,
we find that they are governed by Hindu law simply because of the negative definition of Hindu. Otherwise, whole of the Hindu community is governed by, almost 90% of the Hindu community is governed by Mitaksharai school, which is Yagyavalkya Smriti. Thank you. Okay, so it's a bit off topic, but I just came about this news item. It so appears that post inflation in Britain, nearly 27% of Britons have started skipping meals, and another 65% are turning off their heating to save money among skyrocketing prices. Sky News report, and that's there in my DP also. So a bit off topic, but I found it very strange. You know, आंदोलन ये so we तो have a couple आंदोलन of people who haven't spoken at all. So before I come to you, let me go to Sim. बस मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं आपका जो आपने सवाल पूछा था मैं उसका जवाब देना चाहूंगा, फिर आप हाँ हाँ, बस ये 2 मिनट रुक जाइए वी जी, इसके बाद आ जाते हैं आपके पास ही। अभी आप है ना ठीक कहीं है जल्दी में नहीं है ना, तो फिर इस पे आ जाते जी जी हैं। समर hasn't spoken, Anshul hasn't spoken, and Sim haven't spoken. So Sim, would you like to say something? No, you can skip my turn. Thanks. Okay. Samar and Anshul. नहीं सर, मैं अभी आज एक्चुअली थोड़ा नो वरीज, नो गैलरी वरीज, वगैरह। नो वरीज, हाँ आप फ्लैश कर दिएगा समर जी और जी अंशुल जी जी। वी गो टू वी एंड देन टू Hey, पिनाक। I would like to step in and place a point regarding the conversation हाँ that was प्लीज। going on between Atharvi ji and Deepti ji. Actually, both were right in their places. अथर्वी जो कह रही थी, ये लैंसेट की एक स्टडी है। लैंसेट जर्नल जो आती है उस पर आप गूगल पे जाएंगे तो यू कैन डू सर्च ऑन दैट। मेंटल प्रॉब्लम्स जो है, आई विल नॉट से डिप्रेशन, दीप्ति जी वाज सर्टेनली राइट रिगार्डिंग मेडिकल डिप्रेशन, बट हाँ वैरायटी ऑफ कॉन्जेनिटल एनोमलीज जितनी भी होती है वो तो होती ही है, दैट आल्सो अकाउंट टू सम मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस भी कई तरह की होती है। तो कॉन्जेंटल अनोमलीज जो होती है बाय बर्थ होती है। अब अगर आप फर्स्ट कजन मैरिज की बात करें, सेकंड कजन मैरिज की बात कर रहे हो, तो मैरिज में क्या होता है, जीन जब किसी भी ऑफस्प्रिंग को हम बर्थ देते हैं, अगर वो आपकी एक सेम फैमिली हेरिटेज का ही होगा तो जीन पूल भी आपका छोटा होगा। एंड लाइक अगर जैसे हम लोग में होता है कि लाइक वी मैरी रैंडमली नॉट फ्रॉम आवर लीनिएज, उसमें क्या होता है जीन पूल थोड़ा बड़ा होता है। तो अनोमलीज की एक रिसर्च हुआ था, तो उसमें 3% पाया गया था जो ब्रैडफोर्ड का है, जो पिनाक बोल रहा था, यूके में ब्रैडफोर्ड में हुआ था। वहाँ पे 75% जो पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, बेसिकली कंस्टिट्यूटिंग पाकिस्तानी मुस्लिम्स, दे आर इन्वॉल्व इन दिस फर्स्ट कजन सेकंड कजन मैरिज। तो ये वहाँ का हाल है। और उसमें जो रिसर्च हुआ था उसमें यही पाया गया था कि 3% जो अनोमलीज थी वो सेम सेक्स, सॉरी सेम सेक्स कह रहा हूँ, ये फर्स्ट कजन मैरिज ही जिम्मेदार था इसके लिए। दीज वर ऑल कॉन्जेंटल अनोमलीज। 1.5% वर ड्यू टू अदर रीजंस लाइक आपका स्मोकिंग, ड्रिंकिंग हैबिट्स, जो इस तरह की हैबिट्स थी, अदर मेडिकल रीजंस ये रिस्पॉन्सिबल थे उसके लिए। तो दिस इज अ प्रूवन फैक्ट। अनफॉर्चुनेटली ये चीज काफी बड़ी हुई है, और जितने भी आपके इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं हमने वहां पे बहुत देखी है इस तरह की चीजें। इंडिया की अगर जहां तक बात करी जाए, 93 में एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, उसमें पाया गया था कि 16% टू 38% अमंग मुस्लिम्स जो मैरिज है वो फर्स्ट कजन और सेकंड कजन के बीच में अरेंज करती है। तो ये इन लोग का मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इस चीज में, अदरवाइज कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट इनके में कोई प्रोहिबिशन नहीं है। इनके जो प्रॉफिट थे, जैनब अपनी कजिन से ही इन्होंने मैरिज करी थी। एंड आप अगर इसके प्रो में, जैसे अंशुल भाई पूछ रहे थे कोई प्रो में, तो आप जाओगे देखो बहुत सारे हैं। एक कश्मीरी कोई पब्लिकेशन है, उसका एक आर्टिकल मैंने अभी जस्ट अभी देखा, तो उन्होंने बड़े कायदे से इसको डिफेंड किया हुआ है और बहुत प्राउडली डिफेंड किया हुआ है कि कहीं ये बैंड नहीं है और इट इज कम्प्लीटली हलाल, दैट इज व्हाट दे हैव टर्म। तो इनके यहाँ हलाल हराम का ये कंसेप्ट है कि इट इज एवरीथिंग इज हलाल, तो वो चलता रहेगा, इनको कोई लेना देना नहीं है इस चीज से।
कि कौन से डिजीजेस हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सब्सिडी मिल रही है, चीज़ें हो रही हैं, तो दे आर फाइन विद इट, दे डोंट नीड टू बी कंसर्न रिगार्डिंग इट। पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए, अब चाहे उनको कोई भी दिक्कत हो। और अगर एक लेमैन के तौर पे बात की जाए, लाइक लीव असाइड एनी सॉर्ट ऑफ डेटा एनीथिंग, विजिट एनी सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप अपने शहर, मेट्रोपॉलिटन सिटी, टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटी, गांव, कस्बा, कहीं भी चले जाओ, कुछ डेटा आपको नहीं मालूम होना चाहिए। सीधे आप देखोगे लाइन किन की ज्यादा होती है मेडिकल फैसिलिटीज देने के लिए, आपको खुद मालूम चल जाएगा। You will find a leading percentage of them are suffering from a lot of diseases. Mostly आपके bronchitis और asthma. A lot of them are suffering from these, and it is related entirely to their living habits, their eating habits. इन सब पे है। तो ऑब्वियसली जब आपका जीन पूल छोटा होगा तो सेम आपके ऑफस्प्रिंग्स आगे जनरेशन टू जनरेशन कंपनी करते जाएंगे, जो भी आपके जीन एनॉर्मेलिटीज होंगे वो बढ़ती जाएंगी कहीं ना कहीं। सो दे आर लीस्ट कंसर्न। So we should try to make them educated, because this will ultimately cause अच्छा, a greater problem here in India. एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, द इंटेंट इज नॉट टू टेक दिस क्वेश्चन लाइटली, but is the rampant love jihad and grooming cases which we are seeing in the past couple of decades specifically, are they aware of the problem and this is the way that they are finding to bridge that problem gap? Just a question, that's No, throwing. that is no, Andolanji, that is not true, because you are actually what your question can be translated to in social term, that are they thinking that they do not like this particular Islamic law and they are against it. That's why they are doing and trapping the girls which do not belong to their community. No, they are not against the law itself. Yeah, They are to not against widen the the gene pool, maybe, yeah. Andolan I ji, don't think so. It's more about changing the demography. It's more about, taking, because they consider it as their sort of फर्ज, क्योंकि बाकी लोग जो हैं उनकी नजर में वो ठीक नहीं कर रहे, मतलब दे आर ऑन नॉट ऑन द राइट पाथ, दिस इज बिल्कुल जस्ट अ वे ऑफ ब्रिंगिंग डेमोग्राफिक राइट पाथ चेंजेस एंड ऑल्सो लाने फॉर के लिए ये चेंजिंग लोग कर डेमोग्राफी। रहे हैं इस तरह की चीजें। इससे मतलब इस लॉ का या उनकी जो हैबिट्स हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। बट एक एग्जांपल है इसका भी मेरे पास। आई डोंट नो व्हाट परसेंटेज कंस्टिट्यूट दिस सॉर्ट ऑफ मेंटालिटी, बट अ फ्यू एजुकेटेड पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। I, in my very close contact, in my like prior office, there was a colleague of mine, Mohsin Khan, his name was, and uski family, क्योंकि they were like educated as well as rich enough, तो उनके यहाँ ये sort of mentality थी, जो आप आंदोलन जी जिस तरह पॉइंट आउट कर रहे हैं, कि they were fully aware कि मतलब फर्स्ट कजन, सेकंड कजन मैरिज में ये सब होता है, क्योंकि वी वर प्रेटी ओपन एंड फॉर्चुनेटली इनफ ही कन्फेस्ड कि यस, मतलब जैसे जो मुस्लिम्स होते हैं ना आजकल अपने आप को सब अरब से की वंशज मानते हैं, he was he fully accepted this fact, yeah, my like ancestors converted. So उससे हम लोग ओपनली बात करते थे, तो he said that कि yes, we are fully aware that this sort of problem is arising. That is why now onwards, like his father onwards, हमारे यहाँ नहीं ये होता है, हमारे यहाँ फर्स्ट कजन, सेकंड कजन मैरिज बिल्कुल इंटरनली फैमिली या खानदान जो भी कहे उसमें प्रोहिबिटेड है। तो and then like he is now married to a Christian, तो ये सब चीजें हैं इनके यहाँ। तो मतलब अब किस परसेंटेज पे ये लोग कर रहे हैं इसको एक्चुअली प्रैक्टिकल मतलब थ्योरेटिकली तो ये चीज उसने बताई, अब प्रैक्टिकली कितनी परसेंटेज इस चीज में इन्वॉल्व है ये क्वेश्चनेबल है, बट इट कैन बट बी। समझ जीन पूल बढ़ाने के लिए वो अपनी लड़की दे भी तो सकते हैं ना दूसरी फैमिली में। आई डोंट थिंक दे वुड डू दैट, दे विल ब्रिंग द गर्ल्स इन देयर फैमिली, राइट? So हाँ बट that law, देखिए that उनके यहाँ क्या argument. होता है ना कि जैसे जो ब्रैडफोर्ड की स्टडी जो पिनाक पॉइंट आउट कर रहे थे, उसमें जो रिसर्च किया गया था उसमें उनके स्टेटमेंट्स भी लिए गए थे, लाइक जनरल स्टेटमेंट्स की अपार्ट फ्रॉम मेडिकल, कि अगर साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट्स कि अगर आपके बेटा फॉर एग्जांपल मारी कर लेता है किसी को, तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे? तो कई लोग थे उसमें, कई मुस्लिम्स थे पाकिस्तानी, दे कन्फेस्ड कि
अगर जैसे एक ने कहा था कि मेरे यहाँ पे एक जनरल टेंडेंसी है कि घर वालों को खुश करने के लिए दे विल मैरी देयर फर्स्ट कजन और सेकंड कजन, बट क्योंकि एज दे आर लिविंग इन यूके और लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए और थोड़ा मेंटल ब्लॉकेज भी कम हो गया है, तो they are going to forward to find a white girl. That is what they're looking forward to. So there are two marriages. One for the consent of the families that will remain hidden, and other marriage they will do with a white girl. That is what they are doing. सो उसमें कई फैमिलीज एक्सेप्टेड हैं ये चीज, इस फैक्ट को। एक दो लोगों के उसमें स्टेटमेंट आए थे कि आई विल कंसिडर दिस एज अ होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप, आई विल किक आउट माय सन। तो ये भी है। तो लड़कियों की तो एक्चुअली वहां पे कोई वो होती नहीं है ना, सही नहीं है। और लड़कियों को तो मतलब दे कांट सेंड देयर गर्ल्स टू अनदर लाइक फैमिली। लड़कों को उनके यहाँ छुट्टे सांड है, सीधी चीज अगर नॉर्मल भाषा में कही जाए। तो वो लड़के तो कुछ भी उनके यहाँ कर सकते हैं। तो ये जो हम लव जिहाद के केसेस देख रहे हैं, ऑब्वियसली लाइक मेल चाइल्ड्स आर इन्वॉल्व, फीमेल का तो कोई आता ही नहीं है। बट इसमें समझिए एक और फैक्टर है, जस्ट वन मोर पॉइंट बिफोर वी गो अहेड। जब आप वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज में जो ये पाकिस्तानी या बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स रह रहे हैं उनकी बात करते हैं, तो ये जो आपने जो ये सोच बोली है, जो न्यू थॉट प्रोसेस आया कि वी हैव टू फाइंड अ राइट गर्ल और राइट बॉय, दैट इज वेरी ट्रू। बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व दैट कि मेनी पाकिस्तानी और बांग्लादेश फैमिलीज हैव देयर कजिन्स स्टिल लिविंग इन इंडिया, right? So what they try to do, they try to find a girl or a boy from their cousin's family who is actually living in India, क्योंकि पार्टीशन के बाद most of the time most of the people didn't go। तो और अगर वो नहीं मिलती है तो they try to find somebody who is living in, who has मतलब जो कि हिंदी हिंदू कम्युनिटी से हो या क्रिश्चियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया से हो, ताकि जो इनकी डेमोग्राफी है दोनों तरफ चेंज होती रहे। तो ये भी एक नया फिनोमेना है जो कि मैंने देखा हुआ है। I'm not sure if other people observe, because many people have come across and they said कि oh, they will be very happy if they got married into any Indian Muslim. But जब Indian Muslim इन्हें नहीं मिलते हैं तो they will go for even Indian Hindus too. कैन बी। जी कोई बोलना चाह रहा था? वी हैव धार्मिक एंड वी यू अर्लियर वांटेड टू मेक अ पॉइंट, वी प्लीज गो अहेड। जी सर, मैं तो आपके सवाल का जवाब देना चाह रहा वो था। आपने ब्रिटेन वाले पूछा था कि डाटा जो पे। ये नहीं सर, आपने मुझसे पूछा था कि जेनेटिक डिसऑर्डर से जो एग्रेसिवनेस वगैरह होती है जी क्या जी ये हो सकती है, अगर आपको याद है। प्लीज गो अहेड। तो सर मैं आपको आप बहुत सिंपल एक एग्जांपल सुनाना चाहूंगा कि एक कंप्यूटर कोड का एग्जांपल लेते हैं। तो अगर उस कोड में थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है ना तो पूरा सिस्टम हिल जाता है, मतलब पूरा वो माल फंक्शन करना शुरू कर देता है। तो ऐसी हमारी बॉडी है, जो हमारा पूरा डेटा है ना वो हार्ड कोड भी होता है हमारे जीन्स में। और अगर हमारे जीन्स में थोड़ा भी कुछ बदलाव होता है तो उससे हमारे सिर्फ फिजिकल नहीं, हमारी मेंटल कंडीशन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और मैं सिर्फ ये तर्क से नहीं, मैं डाटा के साथ करना चाहूंगा। तो एनसीबीआई का नाम शायद सभी ने सुना होगा, एक बहुत प्रिवलेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने अपनी एक स्टडी में बताया था कि जो कंसेजिनियस मैरिज होती है, कंसेजिनियस मैरिज मतलब जो फर्स्ट कजिन मैरिज और सेकंड कजिन मैरिज जो होती हैं, तो उनके अंदर जो चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं, उनके जो यू नो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, उनके अंदर 3 टाइम्स मोर रिस्क होता है कि कॉमन मूड डिसऑर्डर और साइकोसिस का। यानी जो उनका मूड डिसऑर्डर्स होते हैं और साइकोसिस होते हैं, वो 3 टाइम्स एट पार रिस्क पे होते हैं। तो ये डाटा खुद ही बता रहा है कि अगर आप फर्स्ट कजिन मैरिज या कंसेंट मैरिज करते हैं तो सिर्फ आपके फिजिकल नहीं, आपके मेंटल कंडीशन पे फर्क पड़ता है। और एग्रेसिवनेस, और एक और डाटा था कि जो 50% ऑफ एग्रेसिवनेस आती है वो आपकी जेनेटिक होती है। यानी अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा एग्रेसिव है तो सिर्फ उसका आउटसाइड सराउंडिंग्स नहीं, उसकी जेनेटिक उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। क्योंकि जो 50% एग्रेसिवनेस होती है, 50% जो एग्रेसिवनेस होती है लोगों में, वो जीन्स की वजह से होती है, और जो बाकी की बची हुई है वो उनकी सराउंडिंग के हिसाब से होती है। तो ये तो 50-50 हो गया। अब आप ये सोचिए कि आपके पास जेनेटिक एग्रेसिवनेस तो है ही है, आपको ऊपर से आपकी सराउंडिंग में भी एग्रेसिवनेस मिल रही है, तो आप कितने एग्रेसिव हो जाएंगे। मैं बस इतना बोलना चाहूंगा। वैलिड पॉइंट्स। धार्मिक जी, राम जी।
Any of you would like to? I wanted to, I don't know how much you guys had the discussion. Hopefully, Ambulant, you got used the couple of research papers we discussed, right? But I was wondering if you talked about the psychological, the social, cultural phenomenon of this as well, right? Because that has a social conditioning or social, behaviors in and around the household that practice this as a cultural ritual, right? And the simple the changes that the kids go through and the psychological effect that it has on them, right? I hope you know. I hope you Yeah, guys had at least a chance to discuss it. we just started speaking upon the apart from the biological aspect, the social issues with respect to safety of girl child, psychological issues among the newborns and the new generation which are born out of such marriages. So please go ahead and make your point. So I again I there's not enough data. I wish I could find one. It's easy to measure scientific based studies, right? That I shared with you. But this is more of a personal anecdote, right? That I have seen growing up, and hopefully there's enough study that happens soon, so we can actually have some sort of backing, like statistical backing, to have a better conversation. But I'm going to, at the risk of being it a personal anecdote, I'll make this hypothesis, right? Think as a nuclear families, especially in the stone pelting peaceful community in India, right? The peaceful minority, the big nuclear family, and I don't mean to say this as a joke. This is absolutely true. Uh, One of the guys that used to work in my father's factory, Nazir Bhai, him and his brother Shaukat, they both worked in our factory. And Shaukat went to marry, uh, you know, back in UP, wherever they were. And Shaukat comes back, and Nazir never left. And 18 months later, Shaukat has a baby. Sorry, 9.5 months later, Shaukat has a baby, and Nazir has a baby too. And I'm like, you didn't go. What's going on? He's like, Shaukat went. It's okay. And I'm not joking. I don't know what this, and that started my curiosity, right? The number of marriages that these guys perform within their families is incredible. Shaukat married his first cousin. Nazir married his first cousin. This led me to believe that this is maybe something insidious is going on. And I went to a very, I went to, it was supposed to be a convent school, but 40% of the population in that convent school, because of the neighborhoods uh, that we had the school in, 40% of the population was, again, the peaceful, stone pelting peaceful minority, right? Kids were being spoken for. First cousins who went to school together. One day you're in eighth grade, all is normal. Ninth grade, you're wearing a hijab outside school and all of those things. And these 14-year-old girls are spoken for the 16 and 17-year old cousins who went to the same school as they did, and they're first cousins, mind you. So it's something very insidious is going on, right? We have to understand how this affects. What message are you sending to the boys who grow up, who think this is normal? And absolutely the girls, the poor girls who grow up in households like this, the entire their autonomy is taken away from them, and all they are literally a baby making factory to be married off as and when her parents choose to be done, right? I'm hoping, again, in urban India these practices are going away. I don't know. I sent you some paperwork. Hopefully, you guys get a chance to read through it first. But in rural India, definitely happens, and we are creating think about I mean, genetic and this and that. You can talk about it for days. There's enough science there. What about the social conditioning of these kids? This general mentality of the people who are going through this.
we are creating an entire generation of people, in essence, right, who go through all of this. A very, I would make a case, a perverted generation. Nothing is sanctimonious anymore. Everything is perverted, right? So I wanted to bring this, and also among all other discussions that you guys have had, right? Think of it as a sociological construct, and everything that comes out of it as a, which you cannot hold anything near and dear anymore. All the mentality that you come out with, right? It's a very dangerous mentality. And I just wanted to put that point forward just as a food, food for thought. Uh, I'm an equal opportunity offender, so I also wanted to make this point, bring this point, of course, out. Not to polygamy, I don't want to go there. There was enough polygamy to be documented among Hindus as well in pre-independence India, and also a little bit fewer years after post-independence India, which is now completely negligible, right? Polygamy. The one other cousin marriages that we spoke of, again, this has started as a practice. There is no religious diktat, right? Whereas in Quran and Hadiths, you'll find who is out, out of bounds, as basically, right? Who's beyond pale and who's not. You'll find all of those. But in our religious scriptures, no such thing involved. This used to be a practice in the monarch. I know Andolanji, you and I talked about this offline. Practice in the monarch, but they used to keep it in the family, right? To keep the wealth in the family or power in the family. Which again, if you look at it in a country where everything was taken away, if all that they had was few acres of land to their name, and if such practices became a cultural norm in certain societies of India, yes, the case I'm saying is, जो भी कुछ बचा है थोड़ा बहुत बचाने के लिए, if they keep it in the family, mama ki beti and all that, it's not a religious sanction to all of this, right? It's a very small subset. I don't know the data on it, but this is the belief I have. I would like to think this practice has gone away from my parents' age, at least in the society that I come from, right? People don't do that anymore. So here were the limited points. Thank you for indulging me, but I went much Thanks, longer than I Naman. wanted. So, before I start, to take concluding remarks, let me remind you that, this is being held under the group detailed discussion. Here we take, micro topics and discuss it threadbare. That's the intent of this particular room. Most of the room gets recorded, and there is inventory of earlier rooms on, various social and, political and legal aspect being covered in this, room. So there are recordings available if you want to go. So like Dharmik ji was mentioning with respect to polygamy, we held a room sometime back on polygamy, very well attended, went on for 2 3 hours, had very good points made. So if you want to refer to some of the earlier conversations within this club, it is available. Just go to the club and go through all the discussion. Most of what we discuss, we record and keep the replays on so that it could be maintained and heard. With that note, I think very good discussion today. We got the best part was that we had a very civilized debate, except for one interruption by Manan Vegan. Most of the contribution which came from the speakers were amazing. The listeners were phenomenal. Very positive and contributing comments on the chats as well, barring few aberrations. Uh, but anybody would like to give a concluding remark among the speaker panels or from the listeners, he can come up. Atharvi ji, Gyan ji, Anshul ji, I, Deepti, Zoravar, V, Dharmik ji, any of you, please flash your mic. Alternatively, yeah, Atharvi ji, go ahead. Yeah, I would say thank you for bringing this topic to be discussed, Andolanji. As a concluding thing, I would say, this thing should be looked down upon. And if you are even thinking of interfaith marriages, you should actually inquire about the family, that what sort of marriages they had previous in their previous generation. So, you never know. Maybe the genetic disorder has accumulated in your partner, and it might show up, even if it's a recessive gene, it might show up in your next generation. So it's very necessary in case if you're marrying the unless I think even it is with respect to even whichever family you marry, you should ask about the family, and if there is some sort of
cousin marriages or not, it's necessary to have a genetic details according to me of that family, so that you are not passing any sort of genetic disorder to your next generation, which can be prevalent when it comes to this. Also, apart from depression or mental health issues, there are or fibrosis or T-cell diseases or thalassemia, or there are also birth defects such as not that the child brain is not developed fully. These are also factors which come into display when it comes to cousin marriages too. So this the such marriages should be definitely discouraged. And what is unfortunate that in our neighboring country there's a new phenomena of step sibling marriages also, which is coming up, which was taboo before, but now they have started doing step sibling as well. Step sibling means that the same father with two wives, and they are marrying each other. Sometimes that happens too. And this is a recent phenomena, and they are actually also promoting it via TV television. This used to be taboo, but it's unfortunate that it is coming up now. So, and I think we, as anybody saying that if it's not happening into your society, you should not be calling it off, calling it out. You should be, because if we want to maintain a healthy society where we get to also get affected mentally in the society, from our neighbors and from our from the people we live together. So it's necessary to call any sort of evil practices which are still being practiced in today's scenario. Yeah, that's all I would conclude my statement with that. Yeah. Fantastic Yeah. points, Andolanji. Dharmik ji. Same thing, I would say thank you for doing the room. And Manan is in love with you, तो आपको छोड़ेगा नहीं सर, तो आप बच के. But I would borrow from our Ambedkarite friends, right? They have educate, organize, agitate. I am not so much for agitating. I'm for debating. So educate, organize, and debate. That's what we should do. We should talk more about these uncomfortable things. It is what it is. This is how society becomes more civil. So thank you for doing such rooms. Thank you. Yeah. Deepti ji. Yes, Andolan ji, this is a very nice room, like Atarvi ji and Dharmik ji said, and I would like to borrow from Dharmik ji that we should debate even uncomfortable things. And it also goes to reiterate that we are very lucky as Indians, and particularly the Sanatani culture that has been handed down to us, which we are particularly made to feel ashamed of, the arranged marriage, the Gotra system, and all that. How cushioning it has been uh, to us all, and how much we've been protected from so many things, um, which is happening, which we are seeing happening on the other side of the spectrum. So it brings out a lot of things, these kind of debates, and do please do host many more such topics. And thank you for all the listeners, and thank you for the moderators for having me. It's been wonderful being here. Thank you, Deepti ji. Ram, I think you were off and on. So if you want to make your opening main comment as well as closing remarks, the time is now. And then we take closing comments from V, and then we end the room. Ram, over to you. सर वी से ही ले लो, मैं अभी बोलूँ. Acha. So V, you wanted to make closing remarks. First of all, I'm very grateful to be in this room, actually, where I can put my thoughts on, and the public or the speakers itself are very patient, and they listen, they conclude, they put points with some validations. So yeah, I'm looking forward for more such rooms from this group, from you, sir, and it's always a pleasure talking with you and you people. And secondly, first cousin marriage. So the most prominent evidence is that Prophet he married his daughter Fatima to Ali. And those who don't know who's Ali, Ali is Prophet's uncle daughter, Prophet's uncle's son. And he himself, Prophet himself, married to Zainab bin Jasna, and she is his cousin. So if you follow someone who is doing such thing, then the followers will definitely pay him on their path. So, but it is, we all know that it is as absurd as
doing these things. So these things should bring on light, and not only the geneticals or biological concerns, but also the physical and social concerns as well. So the people get more aware about that, and hopefully uh, we witness no such cases in future. I hope so. This is nearly impossible to get, but finger crossed. And thank you, Ankur. Uh, so, if anybody else want to make closing remarks, yeah, go ahead. Yeah, I mean, what was just said about the marriage of Fatima, about Muhammad marrying his own cousin, and therefore cousin marriage became sunnat. Sunnat being as in anything that Muhammad practiced in his life. Recommended practice. Yeah, Yes, it becomes a that's what. recommended practice for all Muslims, right? So therefore, say for example, for Muslims, on one hand you can marry your cousin, on the other hand you can marry somebody totally unrelated to you. The preference would be given to marrying your cousin because Muhammad did, right? So that is the idea of Sunnat. But I actually flashed my mic because Andolanji, I want to appreciate the way you conducted this room, the way you handled all the miscreants, and it was such a civil and informative discussion. Thank you, Andolanji. That's why I flashed my mic. Thank you. No, thanks. So, let me take this opportunity to thanks all speakers who are currently in panel and were in panel, and all listeners who were very patient and, gave very decent remarks in the chat section. With that, I'll be closing the room. The replays of the room would be available on the club. So, in case you have missed any part, please go and visit, the recordings, which would be available 10 minutes hence. Good evening, good day to everyone. Jai Shri Jai Ram. Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. This video was made possible by Creative Contents.